हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় চলে আয় ডালা যে তার পড়েছে আজ পাকা ফসলে মরি ভাই 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 ডালা যে তার পড়েছে আজ পাকা ফসলে মরি ভাই 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 পশু তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় পশু তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় আমার নেশায় উঠল মেতে দেখব ধুরা ধানের খেতে আমার নেশায় উঠল মেতে দেখব ধুরা ধানের খেতে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে মরি ভাই 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 পশু তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় পশু তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় রে চলে আয় আয় রে চলে মাঝের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো 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 দুয়ার খোলো মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো 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 দুয়ার খোলো আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শীষে শিশির লেগে আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শীষে শিশির লেগে ধরার খুশি ধরে না গো ধরার খুশি ধরে না গো ওই যে উঠালে
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social economic and political liberty, of thought expression, belief, faith, and worship, equality, of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our Constituent Assembly This 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. Where will you be on a Thursday night? अगर यहाँ पे नहीं है आप 89.3 FM 2GLF सिडनी में कहते सुनते अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू नो. आप अगर फेसबुक पर कहते सुनते 8 से लेकर 10 बजे तक हर थर्सडे नाइट को नहीं सुनते या देखते तो क्या कर रहे हो? यू कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग यूजफुल अगर आप ये कार्यक्रम नहीं देख रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम कहते सुनते हैं. इसमें मैं कहता हूँ, आप सुनते हैं, आप कहते हैं, मैं सुनता हूँ और सारी दुनिया सुनती है. सो आप अगर ये नहीं कर रहे तो आप कुछ खास ही कर रहे होंगे. हो सकता है कुछ खास काम कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं है, लेकिन अगर आप सिडनी में तो आपको यहाँ पर ही होना चाहिए. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम जैसे मैंने कहा थर्सडे नाइट्स को 8 से लेकर 10 बजे तक 89.3 FM पर हम लोग अभी लाइव हैं. फेसबुक पर हम लाइव हैं और यूट्यूब पर भी लाइव हैं. तो अगर आपको फेसबुक से कोई तकलीफ है, जैसे मुझे कई बार होती है, तो आप यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं. और वो भी नहीं तो फिर बाद में आप इसका पॉडकास्ट सुन सकते हैं. लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं. जैसे मुबीना मेरे साथ अभी जुड़ी हैं, मुबीना जामदार, and she's saying hello मनबीर सिंह जी and everyone, and that's of course जिमी कह रहे हैं कि आज बुरे मूड में है जना. अरे नहीं यार, what are you drinking from that glass? No, it is not what you think. No. वो मैं I'm not that good कि मैं वो drinking from the glass करके शो भी कर सकता हूँ. अरे नहीं भैया, मैं बुरे मूड में. जिमी, आप हमारे साथ जुड़े हैं. जिमी इज अ गुड फ्रेंड. आई मीन डिस्टेंस से हम लोग फ्रेंडशिप हमारा निभा रहे हैं, लेकिन आई स्टिल लाइक हिम. एंड हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट आई स्टिल लाइक हैविंग अ लिटिल स्पार विद हिम. सो जिमी, एंड वेलकम टू द शो जिमी. एंड नीरज नंदा जी जो इस कार्यक्रम का एक अटूट हिस्सा है, हमें मेलबर्न से ज्वाइन करते हैं, साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से, और ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन न्यूज़ देते हैं आपको. एंड नव गर्ग्या जी हैज़ जॉइंड अस. गुड इवनिंग ऑल, नव जी इज सेइंग. एंड हम लोग अभी अभा जी की वेट कर रहे हैं. तो अभा जी कहाँ पर है? नो शो हैं. एंड दीपेश कलसारा जी, अगर आप अभी भी हैं तो हेलो दीपेश कलसारा जी, कैसे हैं आप? एंड जिको इफ यू स्टिल देयर, हेलो टू यू. एंड लिटिल वाइल बैक पंकज वीर वॉज ऑल्सो वॉचिंग, एंड सुमन माथुर. ऑफकोर्स इस कार्यक्रम की एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टर है सुमन माथुर, एंड शी इज जॉइंड अस. एंड ऑफकोर्स एंड शी सेइंग हेलो ऑल मनबीर सिंह कोहली ऑफ कहते सुनते. एंड श्रोतागण अरे श्रोतागण जी, श्रोता हम लोग थोड़े और श्रोता लेके आओ. श्रोता लोग, वी नीड टू हैव दिस प्रोग्राम ग्रो. मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज अ प्रोग्राम, ये नंबर 1 प्रोग्राम नहीं है. बाय द वे, वी आर नॉट नंबर 1 बाय एनी लीडिंग सर्कमस्टांसेस, लेकिन येस वी डू प्रोड्यूस सम गुड कॉन्टेंट. डेफिनेटली वी आर नॉट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कि भाई कितने लोग सुन पाते हैं इस कार्यक्रम को, तो नहीं, उतने नहीं सुन पाते जितना आप सोचते हैं. लेकिन येस, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यू नो, जो ये स्क्रीन पे क्या आ रहा है यार, मेरी क्या आ रहा है स्क्रीन पर? आई डोंट नो, आपको भी कुछ नज़र आ रहा है क्या स्क्रीन पर? ये व्हाट इज दिस? Twidget active? No, I am not. Okay, yeah. So this is Twidget is active. In case you are putting any comments on YouTube, so we can also come live. Or ये आपकी जो and Tawfiq is saying hello from YouTube. Tawfiq इस कार्यक्रम के एक important part हैं. And he's been there when nobody has been. So thank you Tawfiq. And Tawfiq आजकल कभी कभी छुट्टी पे चले जाते हैं.
लेकिन ये सब एनीवे आज क्या क्या होने वाले प्रोग्राम पे सुनिए क्या क्या होने वाला है। ढंग की बात मेरे साथ होगी कि भाई शुड वी रीड फ्रॉम बुक्स टू लर्न और शुड वी वॉच वीडियोज एंड लर्न। आप कैसे सीखते हैं? अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे अगर आप अगर कुछ, मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को सुना है कि हम ऑडियो बुक ले लेते हैं और कार में लगा के ड्राइव पे चले जाते हैं या पॉडकास्ट सुन लेते हैं उसका, और वो किताब आप उसको आई एंजॉय द बुक देन। मुझे लगता है नहीं यार, बट कई सारे लोग कोई किताब नहीं पढ़ेंगे लेकिन जिंदगी की सारी लेसन्स टेड टॉक से या वीडियोज से या व्हाट्सएप से वहाँ से सीखते हैं। एंड आई लाइक टू रीड। सो मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप क्या करते हैं? डू यू लाइक टू रीड or do you like to watch a video to learn? So I'm doing a poll right now. In fact, the poll will be on your screen. So do you learn by reading or watching videos? Reading videos या I don't learn. So आप बताइए कि आप कैसे सीखते हैं चीज़ें. So एक तो वो होगा ढंग की बात में. फिर मेरे साथ गुरप्रीत सिंह आएंगे. He is a journalist in Vancouver, Canada. And in the year 2000 कश्मीर में चित्तिसिंघपुरा एक जगह है, वहाँ पर 36 सिखों को मार दिया था टेररिस्ट ने. एंड तो उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं कि ये कश्मीरी टेररिस्ट थे, कोई कहता है कुछ और. तो मैडलिन एल्ब्राइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो उसमें उन्होंने वो उस इंसिडेंट का जिक्र किया था क्योंकि बिल क्लिंटन वॉज ट्रैवलिंग टू इंडिया दोज डेज एंड शी कोटेड हिम कि उन्होंने कुछ कहा था. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कहा था. उन्होंने ये कहा था कि भाई ये कश्मीरी टेररिस्ट ने नहीं मारा है. बट एनीवे, सो वॉट एवर दैट स्टोरी इज, तो वील बी टॉकिंग टू गुरप्रीत सिंह जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, एंड ही रिसेंटली रोट एन आर्टिकल अबाउट दैट. सो आई विल बी टॉकिंग टू हिम. ऑफ कोर्स फिर नीरज नंदा जी आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे वहाँ से, मेलबर्न से, साउथ एशिया टाइम से. एंड देन क्रिस मल्लिका भद्रा विल बी जॉइनिंग अस. एंड ऑफ कोर्स मैं आपको अगर दिल करेगा, मौका मिलेगा तो ओशो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनाऊंगा. तो जाइएगा कहीं पे भी नहीं. आई एम ट्राइंग टू प्ले सम डिफरेंट म्यूजिक ताकि जो फेसबुक है वो नाराज़ ना हो जाए. तो इट्स अ मिक्सचर. उसमें बंगाली गाने भी हैं, हिंदी भी हैं और दूसरी भाषाएं भी हैं. सो मुबीना जी कह रही हैं कि ऑडियो बुक्स फॉर मी. ओके, सो डू यू फाइंड दैट इट्स डिफरेंट टू लर्न? एंड सुमन जी कह रही हैं कि देयर इज एन एक्सप्लोजन इन द वेराइटी ऑफ सोर्सेज अवेलेबल. आई ट्राई ऑल. And Jimmy, I don't know what you said, not burly, bare good. Sorry, okay. So that's a conversation that's going on there. And अच्छा, वो कह रहे हैं आज बुरे मूड में हैं जनाब. नहीं भाई. एंड सुमन माथुर जी कह रही हैं नहीं, बड़े गुड मूड में. अच्छा, गुड मूड में. एंड सुमन माथुर कह रही हैं ऑल गुड ऑन स्क्रीन. सो शी एंजॉयज मे बी. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि आपको ऑल गुड ऑन स्क्रीन लग रहा है? सो या, एंड ऑडियो बुक्स फॉर मबीना. But Mubina, I'm sorry. And let's see, is it Mubina or Mabina? Please do let us know. And I'm sorry if I've mispronounced your name. And that is Mubina Jamdar, diabetes dietitian. So yeah, we might talk to you someday about your favorite subject, Mubina. And let me play some music, and then I'll bring in Dhangg ki baat. Lekin uske pehle, do participate in this poll and tell us, what do you think? Room, zoom, 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 room, zoom, zoom.
তরুণ মুসাফির পথ হারালো হায় কত বনের হরিণ মরে তারি রূপ তৃষায় রুম ঝুম 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 রুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম 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 রুম ঝুম ঝুম খেজুর পাতার নূপুর বাজায় কে যায় যায় রুম ঝুম 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 রুম ঝুম ঝুম 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 So, दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। इज़ द वॉल्यूम ओके? क्योंकि मैं थोड़ा सा साथ साथ में फिजिट भी कर रहा हूँ इसको, वॉल्यूम को। सो यस, ढंग की बात मैं शुरू करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एंड जिमी कह रहे हैं बड़े गुड मूड, माई इंग्लिश इन हिंदी, सॉरी हिंदी इन इंग्लिश इज क्रैप, ओके। एंड सुमन माथुर कह रही है ब्यूटिफुल बंगाली डांस सॉन्ग। एंड मुबीना जी कह रही थैंक यू मनबीर सिंह जी, इट वुड बी माई एब्सोल्यूट प्लेजर टू कम ऑन the show and talk about diabetes prevention and good management of it. Yeah, so one day we might have a chat about that, Mubina. So yeah, keep watching this space. Okay, so हम लोग बात कर रहे थे कि do you learn by reading or do you learn through watching videos? And अब तक जो poll चल रहा है उसमें about 100% people are saying reading. So I'm sure there are lots of you जो कि रीड नहीं करते हैं लेकिन दे आर हैप्पी टू वॉच अ वीडियो। टेड टॉक देख लेते हैं आप एंड देन यू गेन द सेम नॉलेज। यू नो, मैं अगर किताब पढ़ूँ उसको हफ्ता या महीना लगा के, आप उसका टेड टॉक देख लें 2 घंटे में, आप पूरा सीख सकते हैं क्या हो रहा है। अगर आप उसकी ऑडियो बुक सुन लें, पॉडकास्ट, यू नो, आप वॉक पे जाते हैं, पॉडकास्ट लगा लें ऑडियो बुक का, and then you can cover the whole book without having read a single word. So, do we need to read? I like to read, but वो मेरा एक अलग experience है. Okay, so here we go. Better to read and learn or watch videos. ढंग की बात है आज की, 31 मार्च 2022. I have noticed with the coming in of streaming platforms, watching movies, watching videos for entertainment and scrolling is very distracting. I'm sure you have noticed this too and are paying a price for all these distractions. I normally enjoy reading and learning new things. For the practical stuff, I'm happy to watch a YouTube video to learn how to repair a tap or fix a hole in the wall. But if I'm reading a book of fiction or about a historic event, I would rather read. The amount of time I'm spending reading is becoming shorter due to the video options available. Each time I look away from the book to WhatsApp and return to the book, I'm paying a switching cost. This lowers my reading and processing of information on the book's page. I know lots of people who do not read anything at all, but will watch videos and talk about history, society, and even philosophy. Their knowledge comes from TED Talks, YouTube videos, and of course, WhatsApp. When I read, I am also enjoying the images that my mind makes by reading. I am involved with turning the pages of the book, underlining, and maybe even taking time to think. So I read, then I put it away, then I think about what I've read, I process that information. But all this is time consuming. Well, if it is about getting information and we get information from any source, how does it matter that you might say? And rightly so. But somewhere in my heart, I do know there is a deep difference in reading being a better way of learning than just watching videos. So I looked for this information and found that it is better to read than watch videos. Of course, this might be a case of confirmation bias, but I do think I have done good checking of the sources.
In some experiments, it has been seen that when reading, we are able to indulge in making images, mental abstractions, and getting a central idea about the passage. Also, watching a video or movie is a passive act. You're watching and you see what is being shown. While when reading, your mind is active as it needs to work and make the images real. In some research, it was seen that students had better recall when they read in print rather than digitally. Psychologists have demonstrated that when adults read news stories or transcripts of fiction, they remember more of the content than if they listen to identical pieces in a podcast. Look, I don't know. Researchers found similar results with university students reading an article versus listening to a podcast of the text. A related study confirms that students do more mind wandering when listening to audio than when reading. It is also revealed that when we watch a video, the mind gets into an entertainment mode and not a learning mode. As far as I'm concerned, I enjoy the lonely task of reading and underlining books, but these days I'm getting distracted. Hopefully, I will be able to return my love for books and spend more time with them than watching a mindless Bollywood thriller on a streaming platform. What do you think? What is your opinion? Do you think that you read to learn, or do you watch and learn things? So do take part in that poll that's going on, and let me know. Because look, these are important questions, I think. क्योंकि हम लोग इतने distracted रहते हैं आजकल. इतनी सारी streaming services हैं. There are so many options. I'm sure even now when you're watching this on Facebook, साथ के साथ आप stream कर रहे हैं. Come on, tell me. इसमें छुपाने की बात नहीं है. Yeah, and so इसमें कोई छुपाने की बात नहीं. Come on, tell me. Thank you, Neeraj ji, for confirming that the audio is good. Yeah, so that's very nice. And of course, thank you, Suman ji, for also confirming that. And let's see the poll के क्या चल रहा है. तोल मोल के poll, उस पे क्या हो रहा है. Okay, 50-50 हो गया है. So 50% people are saying they learn by reading, and 50% are saying they watch videos. Look, it's not about judging कि भाई कौन सा अच्छा है. मुझे I like the process of reading. Yes, I'm happy to learn by watching videos also. लेकिन जो प्रोसेस होता है ना रीडिंग का, कि आप बैठे हैं कुर्सी पे आराम से या बेड पे लेट के आराम से, आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेजेस बदल रहे हैं. इट्स अ वेरी टैक्टाइल एक्शन, इट्स अ वेरी टैक्टाइल सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन. सो दैट्स मी. बट व्हाट डू यू से? आपको क्या लगता है? कि प्लीज डू टेक पार्ट इन दैट पोल सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट यू do. I'll play some music. लेकिन हाँ, मुझे एक और बात करनी थी. I'll play some music and then we'll come back to you. आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. हेलो. हेलो केतन, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर वॉचिंग. पूर्णिमा मेनन जी, गुड टू सी यू हियर. I'll play some music. Hopefully there will be some different language songs there.
ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো 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 দুয়ার খোলো মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো 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 দুয়ার খোলো আলোর হাসি উঠলো জেগে ধানের শীষে শিশির লেগে আলোর হাসি উঠলো জেগে ধানের শীষে শিশির লেগে ধরার খুশি ধরে না গো ধরার খুশি ধরে না গো ওই যে উঠলে মরি হায় 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 তোষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় 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 রে চলে আয় আয় হাসি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো ঘরেতে আজকে রবে গো খোলো 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 দুয়ার খোলো আলোর হাসি উঠলো জেগে ধানের শীষে আলোর হাসি तो नीरज जी कह रहे हैं आई रीड हियर एंड वॉच नॉलेज एब्सोल्युटली एंड आई नो यू आर एन एविड रीडर एंड इसके पहले सुमन माथुर जी कह रही थी वी आर अ फैमिली ऑफ रीडर्स फ्रॉम grandparents to the littlest of grandkids, great for looking at language structure, spellings as well. And then she says audiobooks are good for long walks. And Ketan ji keh rahe, Manbir ji, I'm fine, lovely song played, thank you Ketan ji, thank you to see you here. And जैसे मैंने कहा कि भाई हम लोग आई एम लकी कि हम लोग इतने सारे लोगों को मिल पाते हैं इस कार्यक्रम के थ्रू. एंड जिमी जी कह रहे हैं आई रीड टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन एंड गेट देम to read to me. I often take my grandson to the library and let him pick the books we read. Isn't that beautiful? What a bonding thing to do. That is so beautiful, Jimmy. And that is so beautiful. Because it is important bonding ke liye. And then Mubina keh rahi hai ki I would love to read traditional books. However, audio books allow me to use my time effectively. As you mentioned, I can listen to it during driving, exercising, and doing mundane household chores. Absolutely, yeah. There is a lot of good things about not reading. You know, when I say that, yeah, if you are a waste, जैसे आप अगर cycle कर रहे हैं, तो I would do that. मैं cycling अगर कभी करता था, तो I would put the headphones on and listen to maybe the radio or the podcast or do something like that. Yeah, and so yeah, it's important for आपका time भी नहीं waste होता, and it's all about maximizing our time. So yeah, that's very nice, Jimmy, what you just said. And Ketan ji, जैसे मैं कह रहा था कि भाई Ketan ji has become a friend recently, but ऐसा लगता है कि I know him for a long time. I hope we can keep this happening. And Zahid Minas has also joined us. अरे Zahid, I hope you keep listening, Zahid. आज हम लोग वो जो इंटरव्यू प्ले करेंगे with Gurpreet Singh, that will be interesting आपके लिए, Zahid. And Zahid Minas 88.5 पर रेडियो दोस्ती करते हैं. And I love his show क्योंकि it's all about दोस्ती between India and Pakistan. समझ वाले निगाहे आशना ना मांग कर तुझको है यकीन ये इजाबत दुआ ना मांग यानी बगैर यक दिले बेमुद्दुआ ना मांग आता है दाग हसरत दिल का शुमार याद मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब खुदा ना मांग कर तुझको है यकीन ये इजाबत दुआ ना मांग यानी बगैर यक दिले बे
सॉरी इस गीत को वहीं पे मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात करनी थी. आई टेल यू व्हाट. ओके, बड़ी अजीब सी बात है. लेकिन कल है, कौन सी तारीख है? कल है 1st of April, April Fool's Day. एंड मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है. हम लोग अप्रैल फूल्स डे को सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं. वी डोंट कॉल अप, वी डोंट प्ले प्रैंक्स, वी डोंट डू सिली थिंग्स. या सो मुझे याद है हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में हुआ करते थे, एंड हमारे एक दोस्त थे, एंड ही वॉज अ चेन स्मोकर. एंड तो एक दिन आए कमरे में तो देखा उनका जो सिगरेट्स थे वो गायब हो गए. सो कहते हैं मेरे सिगरेट्स कहाँ हैं? तो हम दोस्तों ने कहा कि भाई अरे तुम्हारे डैड आए थे क्या? मेरे फादर, उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो ही कुडंट कॉल एंड चेक विद हिज फादर. मतलब हाँ, वो ही इज हियर फ्रॉम, यू नो, ही वाज ट्रैवलिंग, सो ही जस्ट ड्रॉप्ड इनटू द हॉस्टल एंड ही सेड कि भाई मुझे थोड़ा आराम करना है तो कमरा खोल दो. तो हमने खोल दिया एंड उन्होंने सिगरेट्स देख लिए, तुम्हारे सिगरेट्स देख लिए, और ही वॉज रियली एंग्री. और वो सिगरेट्स उठा के ले गए हैं एंड वो उन्होंने कहा है कि अभी शाम में आएंगे. एंड इसकी जो हालत बुरी हुई हमारे दोस्त की, शौरकी की, या क्या हालत थी, देखने लायक. पूरा दिन वो कमरे में बैठा रहा कि अभी डैड आते हैं, जूते पड़ेंगे. लेकिन नहीं हुआ. इट वॉज 1st of April, वी टोल्ड हिम, एंड देन ही वॉज रियली एंग्री. वो हमारे साथ ही गुस्सा हो गया. ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड जबकि वो सबसे बड़ा प्रैंकस्टर हुआ करता था, ये ऐसा डर गया. सो व्हाट इज हैपनिंग? हम लोग 1st of April, April Fool's Day अभी मनाते ही नहीं. क्या हो गया? Have we lost our sense of humor? What are you doing about 1st of April? Are you going to do anything? Are you going to play a prank, or is it gone out of fashion? Have we become boring people? What do you think? April Fool's Day tomorrow, and April Fool's Day, तो कहीं ना कोई politician कुछ ना कुछ बोल ही देगा, and somebody will say, yeah, that's an April Fool message from the politician. So, do you think we've lost our sense of humor? And do you think we need to go back and reinvent ourselves? I try to keep my sense of humor. And there are times when you lose your sense of humor because of what life is throwing at you. But mostly, I think if we keep our sense of humor, hopefully it'll help you with many other things. The poll is still on. I'm still at 50-50. 50% reading, 50% videos. Come on, you guys are not participating. We need more people to participate in the poll. जो आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है दोबारा. So मैं इसको दोबारा लॉन्च करता हूँ. And it'll be on your screen. So tell us, do you learn by reading or watching videos? 50-50 है score अभी तक. What is your score? And let's play some music. And Suman is saying she likes the music. So thank you, Suman, for that. I'm playing random music. So let's see if you like this. சுவாசமே நீதானடி கனாவொன்று நீ தோன்றினாய் என் காதல் நெஞ்சை என் களவாடினாய் முன்னிரவெள்ளம் நீதான் முழுமதியெல்லாம் நீதானே நான் தூங்கும் தலையணை பூவே கனவே நீ கலையாதே मुझे म्यूजिक स्लो करना ही पड़ेगा. राहुल चौधरी, इफ यू आर स्टिल वाचिंग, हेलो, कैसे हैं आप? थैंक यू राहुल. इफ यू आर स्टिल देयर, डू सेंड अ हाय सो दैट आई नो. राहुल इज अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड और अभी वो कहीं से उमड़े हैं. सो हेलो राहुल, आई होप यू स्टिल वाचिंग. थैंक यू. गरी 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 से नी सनी नी सनी दफा मगरी सा सा नी सनी ग मगरी सा 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 नी सनी दफा என் மின்மினி
பொன்வீணை நீ உனை தீண்டும் வீரர்களும் நானடி ஏ பெண்மையே உயிர் பொம்மையே உனை நீங்கி வாழாத என் நான்மையே என ஏனடி நீ கொலை செய்கிறாய் வலிக்காமல் தலை கொய்கிறாய் இருந்தாலும் உனக்காக நான் வாழ்கிறேன் சுகமாக தினம் சாகிறேன் உன் குரல் கவிதைகள் நான் ரசிப்பேன் உன் நிழலோவியம் அதை பிடிப்பேன் புன்னகையிட்டது சட்டென சுட்டது போதுமே ஒரு 100 வில்லம்பு உன் கண்களும் தாக்கியதே என்னை கொஞ்சம் சாகிறதே நானும் இல்லை என்று ஒரு கோடி வார்த்தைகள் உன் உதட்டில் கேட்கிறேன் நீ எந்தன் காதல் என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்வேன் এই আনমনার হৃদয়ে থাকে কি জানে তাকে দেখা দিয়ে যাবে কবে হাত বাড়িয়ে নিয়ে যাবে সে দূর দেশে যেখানে স্বপ্নের আছে নতুন আশা প্রতিজ্ঞা রঙিন পথ চলায় আলো খোঁজে যখন ঘিরে ধরবে অন্ধকার তোমার স্পর্শে আগুন জ্বলবে এগিয়ে যাওয়া আলো খোঁজে যখন ঘিরে ধরবে অন্ধকার তোমার স্পর্শে আগুন জ্বলবে এগিয়ে যাওয়া আনমনার হৃদয়ে কবে যাবে নীরবে সে তাই রাতের আলো জ্বলে প্রতীক্ষায় ঘুম ভেঙে যায় অরুষ্ণ শূন্যতায় তবুও স্পর্শে খোঁজ পেয়েছি ঠিকানা ফেরার পূর্ণতা রঙিন পথ চলায় আলো খুঁজে যখন ঘিরে ধরবে অন্ধকার তোমার স্পর্শে আগুন জ্বলবে এগিয়ে যাওয়া আলো খুঁজে যখন ঘিরে ধরবে অন্ধকার তোমার স্পর্শে আগুন জ্বলবে এগিয়ে যাওয়া যে হাত বাড়িয়ে আনবে রং আকাশ জুড়ে আছে একটু দূরে सो दोस्तों आपको ये म्यूज़िक कैसी लग रही है? इट्स मिक्स्ड, उसमें बंगाली गाने हैं और आई डोंट नो साउथ इंडियन कौन सी लैंग्वेज के हैं. सो इफ़ यू नो व्हाट लैंग्वेज दीज सॉन्ग्स आर प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज ये मैं रैंडम प्ले कर रहा हूँ. सिर्फ ये है कि मैंने इनको कहीं से सिलेक्ट किया है एंड आई थिंक रादर दैन रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदी सॉन्ग्स मैं आई प्ले लैंग्वेज सॉन्ग्स सो दैट एवरीबडी कैन एन्जॉय. आप कोई भी भाषा बोलते हैं तो होपफुली यूल एन्जॉय दैट. सो दैट्स मी एंड ऑफ कोर्स अभी मैं लेके आने लगा हूँ हमारे जो मैंने इंटरव्यू की बात करी थी आपके साथ में कि भाई हमारे गुरप्रीत सिंह हैं. ही इज़ अ जर्नलिस्ट इन कैनेडा एंड अर्लियर ही यूज्ड टू वर्क फॉर इंडियन एक्सप्रेस एंड द ट्रिब्यून एंड उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एंड ही इज़ द ऑथर ऑफ 6 books ऑल्सो. सो आई स्पोक टू हिम एंड आई रिकॉर्डेड दिस इंटरव्यू अबाउट दिस मर्की इंसिडेंट दैट हैपेंड इन कश्मीर. क्योंकि आजकल कश्मीर का मौजू चल रहा है हर जगह पर, कश्मीर फाइल्स मूवी की वजह से. Some people disagree with what's there in the movie. Some people agree. Some people say it's a game changer, etc., etc., etc. And so I will play that interview that I recorded with Gurpreet yesterday. And I hope you. It's a short interview, 13 minutes. ज़्यादा लंबा नहीं है. लेकिन let me see if I can bring it up here.
सो लिसनर्स, जैसे पहले मैंने बताया था कि आज अभी हम बात कर रहे हैं गुरप्रीत सिंह से। गुरप्रीत सिंह एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट हैं एंड उन्होंने 6 किताबें लिखी है एंड इज अ को-फाउंडर ऑफ द रेडिकल देसी, एन ऑनलाइन मैगजीन दैट कवर्स ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। तो उनकी किताबें हैं टेररिज्म, पंजाब्स रिकरिंग नाइटमेयर, फाइटिंग हेट्रेड विद लव, वॉइसेस ऑफ द एयर इंडिया विक्टिम्स फैमिलीज, नोट्स ऑन 1984 एंड सम मोर। उसके अंदर एक फिल्मी बुक भी है। बट बिफोर मूविंग टू कैनेडा, सो आई एम टॉकिंग टू हिम फ्रॉम वैंकूवर. Gurpreet was a staff reporter with the Tribune in Chandigarh, and he has previously worked with Indian Express. So currently he writes for Georgia Straight, and he's a newscaster and talk show host with Spice Radio, all in Vancouver. And welcome, Gurpreet. How are you doing? Manbir ji, thank you so much for your kind introduction, and thanks for having me. Yeah, I'm doing that's fine. fantastic. I read your article in Countercurrents about Madeleine Albright's death and how she's taken a secret अपने ले गई है grave पे. So tell us about that secret. Well, you know what? Madeleine Albright had written a book, and in which she basically quotes Bill Clinton. I'm sorry. So for people who don't know, Madeleine Albright was the Secretary of State. The first woman secretary of the state. That's correct. She created a history. Yep. She created a history. She was also known as a well-established author. She has written a number of books. Yes. So the one we are talking about is it actually covers the Chittisinghpura tragedy. So in that, she quotes Bill Clinton, the then U.S. president, who was visiting India when Chittisinghpura massacre happened. So Bill Clinton blames Hindu extremists if we go by that quote. Okay, so sorry, I want to take a step back. There are lots of people who don't know about the Singhpura massacre. So give us some insight into that. So basically what happened was this village in Chittisinghpura, where the Sikhs have been living for a number of years now. And this is in Kashmir. This is in Kashmir. So people came to the village. Apparently it was a military crackdown because the people who came there, they were wearing Indian Army uniforms. Okay. So they lined up the Sikhs and they killed 36 of them. Okay. This is the fact which has been reported widely. And after that they left. Another fact is that no extremist group in Kashmir actually claimed any kind of responsibility. Mm-hmm. So freedom of suspicion was going here and there. But in the meantime, what was happening? Madeleine Albright wrote this book. She quotes Bill Clinton saying that because Bill Clinton was visiting US and in the end, he believes that if he was not visiting India, probably this wouldn't have happened. Which year was it? It was year 2000. 2000. It was 20th of March, year 2000. I was still in India. I was in Chandigarh actually at that time when the news came in. Okay. And I was like surprised that why would Kashmiri militants kill these Sikhs? Mm-hmm. I mean, there was no provocation. There was no history. And then there was no claim of responsibility from any side. Mm-hmm. And shortly after that, I still remember those images from Malerkotla. Because Malerkotla is a part of Punjab which is Muslim dominated. And Muslims and Sikhs have been living very peacefully in that particular area for a number of years. Mm. Despite that, they had deputed paramilitary soldiers in Malerkotla, which makes no sense. I mean, some kind of messaging was being given by the Indian state that because some Sikhs have been murdered in Kashmir, there might be retaliation. But no such retaliation happened. Okay. People were taking the story with pinch of salt because the Sikhs were not targeted like this before. So why would they be targeted now? That was a question hanging in the air, right? So everybody was surprised. I was surprised. So details were very sketchy. And what happened afterwards, Nanak Singh is the one who survived the attack. He actually is an eyewitness. I have interviewed him a couple of times. So what he says, I'm going to attribute everything to him. Nanak Singh says because these people, when they came, he could figure out that they were not Kashmiris. Okay. From the color of their skin, from the kind of language they were speaking. And because the crackdowns are happening in routine, so people are familiar with the voices of the soldiers deployed on the ground. So they could figure out that they are not Kashmiris, they are outsiders, probably from Maharashtra or somewhere else. And they had played Holi because Holi actually coincided with the Chittisinghpura massacre. Even this time, it was Holi on 18th and 20th was the anniversary of the massacre.
Mhm. And incidentally, 23rd March, we see Madeleine Albright passing away with that secret buried into her chest. Mm. So what happened was, when this incident happened, the eyewitness Nanda Singh says these people were they were they probably threw colors at each other. They played Holi, and he could see that. I mean, Kashmiri Muslims, they don't play Holi. Let's face it. So Holi is a festival which is mostly practiced by the Sikhs or Hindus outside Kashmir. So they were apparently people from Maharashtra or somewhere else, but they were not Kashmiris. They were speaking a language which was not Kashmiri. Then some of them were seen wearing those what we say holy threads, which normally practicing Hindus wear on their wrists. And then when they did all this, when they were leaving, they raised the pro-India slogans like Bharat Mata Ki Jai and all that. So at that time, Bill Clinton was visiting India. Yes. And you say that Madeleine Albright wrote that in a book about this incident. What did she write? She actually says that, you know what, she quotes Bill Clinton, that Bill Clinton believes that Hindu extremists did that. And because he was visiting Kashmir, probably those Hindu extremists wanted to highlight that how Pakistan or the Pakistan-based militants are doing all this in Kashmir. So they wanted to give Pakistan a bad name and wanted to make Pakistan accountable in the eyes of US, because US and Pakistan, they are allies. Now, if we use our common sense, why would Pakistani agency indulge in that kind of an adventure when their closest ally is visiting a disputed area like Kashmir? It's a common sense question. But was this published in the book or not? It was published in the book, and what happened was the Indian government actually protested, and after that, this content was taken out. Okay. In the new edition, this whole para or the passage was taken out. They altered everything. So the problem is, if Bill Clinton was so concerned and Madeleine Albright was so concerned, why they never pursued it to its logical end? We cannot expect Indian government to look into it thoroughly or honestly, because what happened was, immediately after this attack, they apparently tried to cover up everything. Soon after this attack, they started saying this was organized by the Pakistani extremists, and then they gunned down 5 Kashmiris, claiming that they were Pakistanis, and there were protests. Okay. And during the protests, the security forces actually killed 9 of them, 9 protesters. In all, 50 people lost their lives because of this. 36 Sikhs. Afterward, 5 Kashmiris from Patripal area who were blamed for the incident. And then when the people were protesting for justice, they are killed when they were protesting, 9 of them. In all, 50 people lost their lives because of this episode. And it was a complete cover up. We can see it. Was this reported, this cover up or whatever we want to say, was this covered by the press in India at that time? No, the popular press has never gone into those details. But of course, alternative media sources have been covering it. Some activists have been taking a lot of pains to explain this to everyone. That we need to connect all these dots together. I can give you one example. B. Raman, who used to be with RAW, he wrote his book in which he mentions this thing very clearly. During the time of VP Singh government, BJP was supporting that government. This idea was floated that let's train the RSS people and deploy them in Kashmir for counter insurgency operations. That idea was buried. That idea was rejected. But I have reasons to believe that it might have been implemented when the BJP came to power, when Vajpayee was the Prime Minister. So B. Raman has written that in his book. Kya naam hai book ka? It's basically B. Raman's memoir. Okay. Cowboys of the Raw. That's the name of the book. All right. Cowboys of the Raw is the name of the book. And you know what? Another interesting twist is, we have seen how the people involved in Malegaon blast, Samjhauta blast, they had links with the Indian Army officers. One of them, Shrikant Purohit, was probably deployed in Kashmir at some point of time with military intelligence. And those are the people who were trained at RSS-run schools. Okay. So I have reasons to believe that there is something fishy about it. Okay. So what Bill Clinton was saying, it makes some sense. Yeah. But has anybody asked Bill? Bill? The BJP was in power at that time, and BJP is today in power at this time. Yeah. They will probably be trying to sell stories of Kashmiri Pandits, but they are not concerned about what happened with these innocent Sikhs there in Kashmir.
36 innocent Sikhs. And to what extent the Indian agents can go. So, has anybody quizzed Bill Clinton about it? Not to my knowledge. I haven't seen, because the problem is, Manbir ji, let's face it, we have some Sikh leaders who are active in US, very active. They have been working on the campaigns for, say, Hillary Clinton. They have been supporters of people like Barack Obama. Why didn't raise any voice about it? I mean, they should have built some kind of pressure. Yeah. Today, if the Indian state can sell a film like Kashmir Files, this is nothing but a propaganda. What about the Sikh leadership sitting in US and Canada? They can't do anything. If they are so politically influential, they should have done something by now. Yeah. Madeleine Albright should not have been allowed to die like this. Yeah, it's very just tragic, and it's been 22 years, and still there is no clarity on what happened. And those families, obviously, they are languishing. They could have lost the breadwinners of the family. It's very tragic. People have lost fathers, brothers, children, and nothing. And they are unsung. They just get mentioned. Ki bhai, haan, Kashmir mein ye bhi hua tha. And you know what? What about those 5 people who were killed for no reason? I mean, just to cover up everything. They were made scapegoats. The local Kashmiri people who were blamed as Pakistani militants, and they were killed. And their bodies were exhumed to and identified that they were locals, not the people from Pakistan. When we organized a demonstration a couple of years ago in Surrey, here in British Columbia, in memory of Chittisinghpura episode, we actually lit 50 candles. Not just for those 36 Sikhs, also for those 5 innocent Kashmiris who were killed by the army, who were blamed for these murders, and then 9 protesters who were killed for no reason. And now Madeleine Albright is dead, and maybe there are few surviving copies of her initial print, which might have that statement. They do survive. I mean, people have been reading them and quoting them widely. Okay. There is no question about it. But the thing is, Bill Clinton is surviving. He needs to be questioned. Correct. He needs to be made accountable. Because Hillary that's a big allegation he's made. Hillary Clinton, who actually, his wife, was also, state secretary. I mean, she held the same position which was being held by Madeleine Albright long time back. Yes. She can also be made accountable. Correct. And because he's made a big allegation against the Indian government, so he needs to substantiate that. He can't just get away by saying that and then forgetting. Look, Gurpreet, thank you very much. And please keep in touch. We want to know of the work that you're doing. And I'm sure we'll share many stories in future also. Absolutely. Okay. Thank you so much for having me. And thank you for your time at such short notice. Thanks to you. Take care. Take care. Bye-bye. So, dosto, this was Gurpreet Singh. So what is your opinion? Please feel free. I know this is, there is no evidence. Ye sirf people have made these allegations. Nothing has been proven. And so I can't say that this is true or false. Lekin ye bhi ek nazariya hai. So do let us know what your opinion is. And of course, we've been talking about Kashmir. Kashmir Files release hui hai. It has spoken about the pain of the Kashmiri Pandits. And some people call it a propaganda movie. Koi bolta hai ki nahi bhai ye history hai. But I don't care about that. Lekin aapka kya vichar hai, wo important hai. मैंने तो फिल्म भी नहीं देखी. I don't want to spend money on what I think is propaganda. But that's my viewpoint. हो सकता है आपको सही लग रहा हो. तो उसी में कहीं पे Chittisinghpura के जो 36 Sikhs were killed, and वो आज तक no group has taken responsibility. This is what Gurpreet was saying. So what is your opinion? Do you think it's real, or do you think it's just hogwash? What Gurpreet was talking about. आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, and of course this was Gurpreet Singh's personal opinion and personal work that he's done. So I don't know what's true. Okay, but here we go.
போலவே முதல் நாளிலே ஒளிரும் பிறை போலவே உந்தன் நினைவு என்னை மீட்டுதே புயல் காற்றிலே சுழலும் களம் போலவே தாய் நீங்கியே கதரும் செய் போலவே பனி தூங்கிடும் ஒரு குயில் போலவே நீ இல்லா நாட்கள் நினைவாட்டுதே நீ இருந்த நாட்கள் காணலானதே மழை பெய்து ஓய்ந்த வானம் ஆனது பறவையாகியே உயிர் பறந்து போகுதே सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मेरे साथ अभी जुड़े हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे मित्र, हमारे संवाददाता और चीफ एडिटर, या आप जो भी बोलना चाहें, बट ऑल द गुड वर्क दैट ही इज डूइंग, नीरज नंदा जी। नीरज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस गुड। और मेलबर्न, यहाँ पे तो बारिश हो रही है धनाधन, और ऐसे कहा जा रहा है कि जून तक बारिश होगी। ये जो हमारे कनाडा से साथी कुछ बता रहे थे, गुरप्रीत जी, हाँ जी, आई थिंक मैं उस टाइम इंडिया में था, मैं ऑस्ट्रेलिया आने वाला था। हाँ, और ये कुछ अखबारों में ये खबर छपी थी कि ऐसा मैसेकर हुआ है वहाँ पे। हाँ, मैसेकर की तो खबर है, लेकिन उसके बिहाइंड द स्टोरी जो है वो, आई सस्पेक्ट, ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जो मैंने सुना था, कुछ मेमोरी में है कि कुछ उस टाइम समय की जो सरकार थी, आई थिंक वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय जी, और तो कोई वहां पे उन्होंने कोई विजिलेंटे ग्रुप टाइप बनाया हुआ था सरकार ने। दिस व्हाट ही इज सेइंग, या। तो मुझे ऐसा लगता है विजिलेंटे ग्रुप, एग्जैक्टली नॉट ए विजिलेंटे ग्रुप, बट अभी आजकल भी सरकार वैसा ही क्रिएट कर रही है। तो बट वो तो मतलब लोकल कश्मीरी ग्रुप था जो बनाया था उन दिनों में, तो वी कांट से कि उसने किया या किसने किया, बट काफी सस्पिशियस था वो। मतलब ये सर अब मर्की होता है और हम लोगों को बाहर कभी खबर नहीं आती, जिसको डीप स्टेट की बात करते लोग। हाँ, नहीं, डीप स्टेट तो बन ही गया, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए खबरों पे आते हैं। खबरों के बादल छाए हुए हैं पूरे भारत के ऊपर, और या तो आ गए हैं या आने वाले हैं। रशिया के विदेश मंत्री श्री सर्गी लेवारोव आज से भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी, जिसको कि पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने जो रशिया का जो एक्शन है चल रहा है, जिसको उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस कहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको इन्वेजन कहा है, ये भारत ने उसको कंडेम नहीं किया और सॉर्ट ऑफ नॉन अलाइंड या न्यूट्रलिटी शो की उसने, बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक रीजंस जी। तो ये जो यात्रा है ये 2 दिन चलेगी, आज और कल। तो मैं अधिक बता नहीं सकता क्योंकि ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो पहुंच गए हैं। और आशा है कि भारत द्वारा इसमें जो दो चीजों पे खास जोर दिया जाएगा। एक हो सकता है कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत को थैंक करेंगे उनके स्टैंड के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव देंगे उनको। और भारत जो सस्ते दामों पर रूपी रूबल ट्रेड के अंतर्गत कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल रूस से रशिया से खरीदना चाहता है, उस बारे में कुछ बातचीत होगी आगे। स्पेशली रूपी रूबल ट्रेड जो सोवियत संघ के जमाने में भी चलता था, मतलब कोई नई चीज नहीं है वो। बेसिकली उसमें मैं एक लाइन में बता दूं जल्दी से, ये होगा कि वी हैव टू पे इन रूबल्स बेसिकली। यस। तो उससे क्या होगा कि भारत और दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे हम कोई रशिया से खरीदेंगे तो हम रुपीस देंगे, उन रुपीस को वो इंडिया में से बाई कर लेंगे कुछ जी, समथिंग लाइक दैट। और एक पॉइंट और है इसमें
कि भारत जो S-400 मिसाइल, जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं मेरे ख्याल से, जो आई सस्पेक्ट उन्होंने यूक्रेन में भी यूज किए रशिया ने, वो भारत में ऑर्डर किए हुए हैं, जिसका कुछ इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी हैं और कुछ बाकी आनी है। तो उस बारे में होगा, क्योंकि भारत उसकी बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में एडवांस पेमेंट कर चुका है, तो भारत चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी डिलीवरी हो। और जबकि वो उन सैंक्शंस के अंडर भी आ जाता है जो अमेरिका ने लगाए हैं रशिया के ऊपर, तो भारत के लिए थोड़ा सा डायलेमा है। पर रूस ने तभी कह दिया था कि नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। और ये सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में फरा टोमाजिन का आर्टिकल है कि यूएस ऑस्ट्रेलिया कंसर्न एट प्रपोज सैंक्शन स्कर्टिंग रशिया इंडिया बैंकिंग की सीन। तो इंडिया और रशिया के बीच में जैसे स्विफ्ट का ट्रांसफर होता है ना, तो क्योंकि अमेरिका और दूसरे कंट्रीज ने जो रशिया के साथ में ये ट्रांसफर सिस्टम बंद कर दिया है, स्विफ्ट पे बैन लगा दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन इंडिया इज गोइंग टू डू इट, स्विफ्ट दे विल अलाउ इट, ताकि इंडिया कैन बाय पेट्रोल, जैसे आप बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है। गूगल रुपी भी ट्रेड करना है तो कोई सिस्टम तो चाहिए ना ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ, तो वो द क्वाड इज गेटिंग अपसेट अबाउट दैट। Yeah, it's just basically a paper transaction, you know. जी। But तब भी वो you need it. वैसे चाइना का स्विफ्ट सिस्टम भी है जी। अब मुझे पता नहीं वो यूज होगा नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू से। उधर एक करंट लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया की न्यूज था, उधर एनआरआई अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मेलबर्न यूनिवर्सिटी की जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट है, जिसको AII कहा जाता है, which is sort of a tank, you know, financed by the Australian government, के 13 एकेडमिक फेलोज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस चीज का वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रिपोर्ट के अनुसार ये एकेडमिक्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा इंस्टीट्यूट के भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर क्वाजी डिप्लोमेटिक फोकस से नाराज है। मतलब उनका ये कहना है कि ये एक एकेडमिक वर्क के लिए इंस्टीट्यूट है, ना कि जो भारत की पॉलिसीज हैं और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज हैं उनमें जो कुछ आदान प्रदान चल रहा है उसको प्रमोट करने के लिए नहीं है। तो क्या है कि उन लोगों का ये कहना है कि इसमें जो हमारी एकेडमिक फ्रीडम है वो मारी गई है, उसके चलते उन्होंने रिजाइन किया। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा जर्नलिज्म है इसके अंदर। और उन्होंने 2020 की भी एक लेटर उसमें स्टोरी में डाली है कि उसमें 24 जनों ने उस समय भी प्रोटेस्ट किया था। तो मैंने इसको आज फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, बट मुझे अधिक पता नहीं चला। और आज जो AIII का जो नया रूप है अब, जिसमें लीजा सिंह जी जो पहले लेबर की लीडर थी तस्मानिया से, तो वो CEO हैं, तो उनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है अभी तक। और जो बेसिकली है कि जो कूटनीति की प्रमोशन है ना, उसको लेके ये झगड़ा है बेसिकली, कि भाई ये इसमें फोकस एकेडमिक्स का होना चाहिए और क्रिटिकल भी होना चाहिए कुछ मतलब, कि भाई अगर सपोजिंग इंडिया में कोई चीज ठीक नहीं है या ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज ठीक नहीं है, या इन दोनों के जो साउथ एशिया से कनेक्शन है उस पर एकेडमिक अप्रोच होनी चाहिए, तो उसको लेके नाराजगी है, तो उसको लेके ये रेजिग्नेशन जो है उस पर ये स्टोरी है जी। और इस हफ्ते बहुत बड़ी ये खबर ये थी कि जो ट्रेजरर है जोश जी, उन्होंने सन 2022-23 का बजट पेश किया पार्लियामेंट में, जिसको मैंने पूरा उनकी स्पीच सुनी और काफी टेक्निकल भी था। इसके कुछ मुख्य पॉइंट ये थे, जल्दी से बताता हूँ आपको। कुल डेट जो है ऑस्ट्रेलिया का वो $78 बिलियन होगा, जो कि काफी अधिक है, और इसके लिए पेंडेमिक को भी जिम्मेदार लिया जा सकता है, लेकिन 100% पेंडेमिक जिम्मेदार नहीं है इसके लिए जी। एक अच्छी खबर ये है कि फ्यूल एक्साइज जो है, एज आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर पीपल नो, 50% लेस को काट दिया गया है। ये 44 सेंट्स थी, सो नाउ इट हैज बिकम 22 सेंट्स। तो 22 सेंट्स तो आई थिंक ऑलरेडी कट हो गया है। एक्चुअल प्राइस क्या है ये मालूम नहीं है। और $420 टैक्स ऑफसेट फॉर लो एंड मिडिल क्लास इनकम अर्नर्स है इसके अंदर, और $250 पेमेंट फॉर वन ऑफ पेमेंट जस्ट इन योर अकाउंट फॉर पेंशनर्स, वेटरन्स एंड सो ऑन, जो इस टाइप के लोग हैं। मतलब और पेट्रोल के प्राइस थोड़े गिर भी चुके हैं आज। हाँ, ऑलरेडी बजट आने के उसी समय गिरने शुरू हो गए थे। और सब्सिडाइज्ड मेडिसिन जो हैं, ये भी एक अच्छी खबर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन है कि ये मोर मेडिसिन विल बी सब्सिडाइज्ड। तो
तो इसके बदले कि मैं आपको और डिटेल्स बताऊं, साउथ एशिया टाइम्स में मैंने इस पे स्टोरी की है और बजट पेपर्स का लिंक दिया है, तो किसी को देखना हो तो उस पर पढ़ सकते हैं वो पूरा होता कि इसमें कि इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या होगा, फॉरेन अफेयर्स में कितना खर्चा होगा, तो हर चीज का, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत कुछ है बजट के अंदर। और कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई एक पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया है पॉलिटिकल लेवल पे कि ये प्री बजट स्पेंडिंग स्प्री है बेसिकली। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लिबरल पार्टी का एलिगेशन होता है लेबर पार्टी पे कि वो स्पेंड बहुत कम करते हैं और अर्न बहुत कम करते हैं, स्पेंड बहुत ज्यादा करते हैं, दे आर टू मच स्पेंडिंग। तो अब तो इस बजट से लग रहा है वो खुद बहुत स्पेंड, मतलब जो है मतलब खर्चा करेंगे, मतलब जी दे विल बी स्पेंडिंग, बट इट इज फॉर पीपल बेसिकली। हाँ, प्री इलेक्शन कह रहे हैं कि भाई दिस इज प्री इलेक्शन स्पेंडिंग। तो उधर एक खबर है कि के अनुसार यूरोपियन पार्लियामेंट के 2 मेंबर्स हैं, जैकब एंड मार्टी ने भारत का जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध का जो नॉन अलाइनमेंट है उसके ऊपर इशू उठाया है, मतलब जो कि यूरोप में काफी चल रही है ये न्यूज। और वो प्रश्न उठाते कहा है कि भारत को इसके बदले अपनी सॉफ्ट पावर यूज करके इस युद्ध को बंद करवाना चाहिए किसी तरह। भाई अगर आप इतने ही क्लोज हो रशिया के, तो आप रशिया को इम्प्रेस करो कि वो इस युद्ध को बंद करें, मतलब ये बेसिकली। और ये दोनों एमपी जो है ये ग्रीन एंड फ्री अलायंस जो है उस गुट के हैं, और कुछ समय पहले इन लोगों ने भारत में भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को उठाया था। तो ये इन्होंने अब की बात हुआ फिर इस बारे में किया। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए आज बड़ा क्रूशियल दिन है, आज मेरे ख्याल से वोट होना है वहां पे, अभी तक हुआ नहीं है। और इमरान खान जी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं बेसिकली। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब जो फौज जो है पाकिस्तान की, वो इमरान खान जी से खुश नहीं है उनकी पॉलिसीज को लेके। आज वहां ये फैसला होगा कि वे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वोटिंग हुई तो मेरी ये थिंकिंग है, हो सकता है स्पीकर जो है ही इज प्रो इमरान खान, तो वो कुछ ऐसा कुछ चाल चल दें कि वोटिंग ना हो। लेकिन आज उनके विरोध में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होगा, और उनका एक अन्य, और उनकी खतरा इसलिए बन गया उनके जाने का कि एमक्यूएम जो उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि 7 सीट पार्लियामेंट में ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है उनको, ही नाउ डज नॉट हैव मेजॉरिटी। तो उसके लिए 172 वोट चाहिए आउट ऑफ 342 टू बी इन पावर, बट वो उनके पास नहीं है उतनी सीटें। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आज ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भाषण दिया जी। और काफी इंटरेस्टिंग है ये भी कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको चांस दिया ये, बट उन्होंने अपनी बात कही इसमें, मैंने पूरा नहीं सुना है, बट उन्होंने जो मैंने पढ़ा इधर उधर से, खासतौर पे एबीसी न्यूज से, उन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है वो मतलब फ्रीडम, डिग्निटी या फिर आज़ादी को समाप्त नहीं कर सकता यूक्रेन में। ये उन्होंने अपना जो इस चीज पे कहा। और उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उनको कहा कि वो वॉर क्रिमिनल है। और उसके चलते जो ऑस्ट्रेलिया ने अन्य कुछ और सपोर्ट यूक्रेन के लिए अनाउंस किया, जिसको लेके जो कि $160 मिलियन का हो गया है। उधर स्पुतनिक न्यूज जो रशिया की न्यूज एजेंसी है के अनुसार रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन के साथ टॉक्स में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो रही है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है। और उन्होंने ये भी आरोप, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशिया के आरोप लगाया है कि यूक्रेन पर जो है यूक्रेन जो है ड्रोन्स की सहायता से बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज कर सकता है, मतलब ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है। और एंड में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ अप्रैल फूल से। बहुत अच्छा हुआ आपने ये जिक्र कर दिया, लेकिन मैं तो आपको पता ही है फिल्म बफ हूँ बड़ा जबरदस्त इस मामले बिल्कुल। में। 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल। जी जी। और इसमें हीरो थे विश्वजीत और हीरोइन थी सायरा बानू। टाइटल सॉन्ग भी बड़ा ग्रेट था उसका, था टाइटल सॉन्ग भी था, और उसमें 7 या 8 गाने थे जो हिट हुए थे अपने जमाने में जी। और एक्चुअली क्या है, इसकी 2 लाइन में स्टोरी ये थी कि जो हीरो है उसको प्रैक्टिकल जोक करने का बहुत शौक होता है, मतलब
और जो वो प्रैंक जो है ना जिसको आप कह रहे थे, हाँ जी, तो वो करते हैं और उसके चलते ही उनका जो है लव अफेयर हो जाता है सायरा बानू के साथ, हाँ। एक प्रैंक के चलते, और एक और प्रैंक करने के चलते दे आर टारगेटेड बाय एन इंटरनेशनल गैंग। तो ये स्टोरी है इस फिल्म की। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले अप्रैल फूल इस मूवी को देख के, बड़ी लाइट मूवी है ये बेसिकली, इसके गाने वगैरह बहुत एंटरटेनिंग है, जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। तो आप इसको अगर अप्रैल फूल वाले दिन देखें, आई एम श्योर, अप्रैल फूल मैं नहीं कर रहा आपके साथ, बट तो देखें तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। और केजरीवाल साहब के घर पे अटैक किया गया, वो आप मिस कर गए। साहब के घर पे भी अटैक हुआ और उसके ऊपर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे उस बंदे को। जबकि सारे जो है सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें जो हैं बरसात बह रही हैं, मतलब बरसात के पानी की तरह। जैसे जेएनयू का भी आज तक नहीं पकड़ पाए कोमल शर्मा को, और वो गायब है जी, और उनकी तेजिंदर बग्गा से एंगेजमेंट भी हो गई। तो इसी को डीप स्टेट कहते हैं ना, मतलब इसी को डीप स्टेट कहते हैं, या सेमी डीप स्टेट कहेंगे। तो इस पे एक बुक भी आ चुकी है पूरी, ये मुल्क जो है अनफॉर्चुनेटली एक डीप स्टेट बन गया है। तो ऐसे तो बहुत इस टाइप के मनबीर जी बहुत किस्से चल रहे हैं भारत में, अन्य देशों, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं ऑफ कोर्स, और बांग्लादेश में चल रहे हैं, श्रीलंका में चल रहे हैं। तो हमारा जो साउथ एशिया तो है वो बहुत तेज है इन कामों में, मतलब। चलिए, तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, and I wish all of you a very good night. Thank you. And happy April Fool's Day to you tomorrow. Okay जी, thank you. चलो, take care. So, bye. Thank you. ये थे नीरज नंदा जी, साउथ एशिया टाइम से जो जुड़ते हैं हमारे साथ हर थर्सडे नाइट को, एंड उनकी वेबसाइट है southasiatimes.com.au, and it's a portal where you can read articles एंड इंडिया के बारे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो इट्स क्वाइट हैंडी, आप ज़रूर वहाँ पर जाके विज़िट कीजिएगा। और आपको बता दूँ कि मैं थोड़ी सी म्यूज़िक लगा रहा हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू कि भाई नगमे हैं, किस्से हैं, ये एक शो होने वाला है। तो दिस इज़ राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन एंड आई विल प्ले सम म्यूज़िक व्हाइल यू ट्राई टू रीड दैट। பாதங்கள் சென்ற பாதைகளில் உன்னை தேடியே எங்கும் நானும் அலைகிறேன். கண் தூங்கியே பல நாட்கள் ஆனது, என்னை தேடி நீயும் ஓடி வந்திடு. உந்தன் பெயர் சொல்லியே நானும் இங்கு வாழ்கின்றேன். உந்தன் விழி பார்வைக்காக தினமும் தேகிறேன். நீயும் விளையாடி முற்றம் எங்கும் ஓடியே என் கால்கள் ஓய்கின்றதே. நதி மீதிலே ஒரு இலை போலவே, அலை மேலொரு சிதறும் துளி போலவே, முதல் நாளிலே ஒளிரும் பிறை போலவே, உந்தன் நினைவு என்னை மீட்டுதே. புயல் காற்றிலே சுழலும் களம் போலவே, தாய் நீங்கியே கதரும் செய் போலவே, பனி தூங்கிடும் ஒரு குயில் போலவே, நீ இல்லா நாட்கள் என்னை வாட்டுதே. நீ இருந்த நாட்கள் காணலானதே, மழை பெய்து ஓய்ந்த வானம் ஆனதே, பறவையாகியே உயிர் பறந்து போகுதே. परदेसी बालम दान वकली, परदेसी बालम दान वकली, मेरा विदेशी घर आबना, मेरा विदेशी घर आबना, परदेसी
सो दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली एंड अगर आप पहचान नहीं पा रहे तो मैं ही हूँ, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। एंड आपको बता दूँ कि नगमे हैं, किस्से हैं, 24 अप्रैल को होने वाला है। सो थोड़ा ही दिन बाकी हैं। 80% से ज़्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो अलंकार को फ़ोन कीजिए 0402-742-493 0402-742-493। तो या उनसे बात कीजिएगा एंड या सो प्लीज़ डू listen and please do join the conversation. And of course we have some conversations going on जो मैंने अभी देखी है वहाँ पर जिनकी स्क्रीन है. let me bring it up. Okay. कहाँ गए? yes. So दीपक जोशी जी कहते हैं कि भाई good news coverage नीरज. एंड सुमन माथुर कह रही हैं सच enjoyable songs whatever the language. You are right. मैं ब्लाइंड प्ले कर रहा हूँ. आई मीन ऑफ कोर्स वो मैंने फिल्टर थोड़े डाले हैं कि कौन से गाने चाहिए किस टाइप के, एंड इट जस्ट थ्रू अप दिस नाइस प्ले लिस्ट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉइंग दैट. एंड सुमन माथुर कह रही हैं थैंक्स नीरज नंदा, नाइस वाइड कवरेज, very rich resource South Asia Times. Thank you for that. Thank you for supporting नीरज जी. एंड मुबीना जी भी कह रही हैं कि ग्रेट कवरेज नीरज जी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबीना जी फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉन्वर्सेशन. अभा गार्गे पहुंच गई हैं. वो कह रही हैं गुड इवनिंग ऑल. अरे गुड इवनिंग कहाँ है, अभी तक गुड नाइट हो चुका है यार. लेट नोट लेके आया करें आप. Okay, so here is a long message from Mubina, which I had put on the screen, and she says, I pray for love, peace, harmony, and unity for all. The very core of Indian tradition and philosophy that many seem to forget about, that says, Vasudeva Kutumbakam. Yes, I'm sorry, my Sanskrit isn't that great. Meaning the world is one family. Yeah, that is beautiful. And Harmon Walia ji was also watching. Harmon Walia ji is... he's a local photojournalist and he's very generous with his time and effort. So thank you Harmon ji if you're still there. And Amoldeep कहते हैं कि एक था दविंदर, and I'm sure ये बात कर रहे हैं जो वो सिंहपुरा की जो ट्रेजेडी थी उसके बारे में. So yes Amoldeep, and एक था दविंदर, and who knows कौन कौन और था. एंड रेनू सिंगल जी, अरे भाई आप नज़र नहीं आई पहली. सो रेनू सिंगल जी कह रही हैं रीडिंग एंड वॉचिंग वीडियोज बोथ आर गुड सोर्स ऑफ लर्निंग. इफ आई वांट टू कुक समथिंग नाउ डेफिनेटली वॉच वीडियो, बट ऑफ कोर्स रीडिंग इज बेस्ट. वी रीड एंड सेम टाइम वी डू विजुअलाइजेशन. सो आई थिंक वी रीड, आवर ब्रेन वर्क्स मोर एक्टिवली. एब्सोल्युटली ट्रू. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कि जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोसेस करनी पड़ती हैं. And so all those, keep those comments coming in please. तो हम लोगों को पता लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं. And do you want me to play some Osho for you? I'll play some Osho. फिर उसके बाद में मैं अपनी दोस्त क्रिस मल्लिका बद्रा को लेके आऊँगा. And so till then I want to play this. This is a very interesting talk by Osho. And hopefully आपको भी ये पसंद आएगा. 4-5 मिनट का प्ले करता हूं मैं इसे. जीवन का लक्ष्य क्या है? इट्स इन हिंदी, सो होपफुली इट शुड लोड अप. ज्यादा मालूम पड़ता है, लेकिन एक मित्र ने पूछा है जीवन का लक्ष्य क्या है. ये प्रश्न तो बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन शायद इससे जटिल और कोई प्रश्न नहीं. और प्रश्न की जटिलता ये है कि इसका जो भी उत्तर होगा वो गलत होगा. इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वो गलत होगा. ऐसा नहीं कि एक उत्तर गलत होगा और दूसरा सही हो जाएगा. इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी और कोई चीज नहीं है जो लक्ष्य हो सके. जीवन खुद अपना लक्ष्य है. जीवन से बड़ी और कोई बात नहीं है जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके. और सारी चीजों के तो साध्य और साधन के संबंध हो सकते हैं, जीवन का नहीं. जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है.
जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा है। जीवन ही वो जो जीवंत ऊर्जा है हमारे भीतर, वो जो जीवन है पौधों में, पक्षियों में, आकाश में, तारों में, वो जो हम सबका जीवन है, वो सबका समग्रीभूत जीवन ही तो परमात्मा है। ये पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, यही पूछना है कि परमात्मा का क्या लक्ष्य है। ये बात वैसी ही है जैसे कोई पूछे प्रेम का क्या लक्ष्य है, जैसे कोई पूछे आनंद का क्या लक्ष्य है। आनंद का क्या लक्ष्य होगा, प्रेम का क्या लक्ष्य होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा। संसार में दो तरह की चीजें हैं, एक जो अपने आप में व्यर्थ होती हैं, उनकी सार्थकता इसमें होती है कि वो किसी सार्थक चीज तक पहुंचा दें। उन चीजों को साधन कहा जाता है, वो मीन्स होती है। एक बैलगाड़ी है, उसका अपने में क्या लक्ष्य, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें बैठ के कहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर पहुंचना लक्ष्य में हो तो बैलगाड़ी साधन बन सकती। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य, लेकिन अगर लड़ना हो, लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन सकती। तो जीवन में एक तो वे चीजें हैं जो साधन हैं, और कुछ करना हो तो उनके द्वारा किया जा सकता, और अगर न करना हो तो बिल्कुल बेकार हो जाती। जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जो साधन नहीं है, वे स्वयं ही साध्य हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं है कि वो कहीं आपको पहुंचा दे, उनका मूल्य खुद उनके भीतर है, खुद उनमें ही छिपा है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। प्रेम अपने आप में ही अपनी उपलब्धि है, उसे पा लेने के पीछे कुछ और नहीं पा लेने को बचता, और वो किसी और चीज का साधन भी नहीं है। आनंद भी अपने आप में अपना साध्य है। जीवन तो परम साध्य है स्वयं में, उसके पार और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए वो माध्यम बन सके। इसलिए ये पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एकदम ही ऐसा प्रश्न पूछना है कि इसके जो भी उत्तर दिए जाएंगे वो सभी गलत होंगे। लेकिन हम पूछते हैं, और पूछना हमारा सब प्रयोजन है, अर्थपूर्ण है। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं कि वो क्या है। अगर हमें ये पता होता कि जीवन क्या है तो हम कभी न पूछते कि उसका लक्ष्य क्या है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो पूछ सकता है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है, और जिसने कभी आनंद नहीं जाना वो पूछ सकता है कि आनंद का लक्ष्य क्या है। लेकिन जिसने प्रेम को जाना है उसके जानने में ही उसके लक्ष्य को भी पालेगा, और नहीं पूछेगा कि प्रेम का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब कोई ये पूछता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, तो मैं जानता हूं कि वो इसलिए पूछ रहा है कि उसे जीवन का ही पता नहीं। अगर जीवन का पता हो तो कोई उसका लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन खुद है अपना लक्ष्य। लेकिन चूंकि हमें जीवन का ही पता नहीं है कि जीवन क्या है, इसलिए हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वो बिल्कुल जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं? जन्म ले लेने से मृत्यु लेने तक का जो उपक्रम है उसे हम जीवन समझते हैं। वो जीवन नहीं है, वो धीरे धीरे मरने का नाम है। उसका जीवन से क्या संबंध? बच्चा पैदा होने के बाद मरना शुरू हो जाता है। आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वो मृत्यु की घड़ी है, शुरुआत है मृत्यु की। 70 वर्ष बाद वो मरेगा, 100 वर्ष बाद मरेगा। मरना आकस्मिक नहीं है कि अचानक आ जाता है। रोज रोज हम मरते जाते हैं, धीमे धीमे मरते जाते हैं। मरने की लंबी क्रिया है, लंबी प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते हैं, रोज मरते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की लंबी क्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। ये जो लंबी ग्रेजुअल डेथ है, ये जो धीमे धीमे मरते जाना है रोज रोज, इसी को हम समझ लेते हैं कि जीवन है। कल और आज में आप थोड़ा मर चुके हैं, नहीं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते थे। कल आप और थोड़े मर जाएंगे। रोज हम मर रहे हैं, इस मरने को हम जीवन समझते हैं।
तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते, जन्मते और मरते, और रोज रोज वही रिपीटिशन, वही दोहराना, वही सुबह उठाना, वही सांझ सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही झगड़े, वही संघर्ष, यही सब रोज रोज। इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात तो ये निवेदन कर दूं कि ये जीवन ही नहीं है जिसको आप जीवन कह रहे हैं। तो ये हैं ओशो टॉकिंग अबाउट जीवन का लक्ष्य क्या है। सो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनिएगा उनको, एज यूजुअल ओशो इन हिज ग्रेट स्टाइल। एंड या सो आई एम अ बिग फैन ऑफ ओशो, सो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है कि ही इज़ द ओनली, नॉट ओनली, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू जिनकी ऑथेंटिसिटी, जो इंडियन गुरुज का जो लाइन है, ही वॉज रियली ऑथेंटिक, हिम एंड जिड्डू। बाकी सारे कॉपी कैट्स और अपना धंधा चलाने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन दिस इज माई ओपिनियन, ओके, सो यू कैन डिसएग्री विद दैट। एंड चलिए थोड़ा सा गीत लगाता हूं, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यश चोपड़ा का जो कार्यक्रम होने वाला है, इसके बारे में कभी कभी मेरे दिल में ये यश चोपड़ा के गीत होंगे, एंड ये सब लोकल जो सिंगर्स हैं दे विल बी परफॉर्मिंग. So yeah, so do come for that, and this is somewhere in June. Let me bring that. उसका मैंने स्क्रीन पे डाला है उसका जो फ्लायर है. It's on 3rd of June 2022. 3rd of June 2022, Pioneer Theatre, 14 Pennant Street, Castle Hill, and 7 बजे शाम में. So अगर आप सिडनी में हैं तो 3rd June 2022 को आप मंजू मित्तल जी को फ़ोन कर सकते हैं 042-520-4364 042-520-4364. सो 3rd June 2022 को कभी कभी मेरे दिल में, रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा. सो दिस शुड बी अ ग्रेट. एंड सो लोकल आर्टिस्ट हैं दिलीप भावे, आशुतोष जैन, रुचा नांगा, हीना सचदेवा एंड रूहानी टिल्नो. सो दीज पीपल विल बी परफॉर्मिंग. सो दिस इज़ ऑल लोकल टैलेंट, एंड जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको हमने सपोर्ट करना है. आप भी प्लीज़ कीजिए सपोर्ट. एंड जैसे पहले मैंने कहा, म्यूजिकली योर्स प्रेजेंट्स नगमे हैं, किस्से हैं. एंड ये 24 अप्रैल को है. अलंकार को आप फ़ोन कर सकते हैं 0402-742-493 0402-742-493. सो ये सब कुछ हो रहा है सिडनी में, एंड लोकल आर्टिस्ट हैं. सो लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए. एंड सो लेट्स प्ले सम म्यूजिक एंड देन क्रिस मलिका बत्रा. आपके कमेंट्स अगर आ रहे हैं तो बताइए. इफ़ यू आर वॉचिंग, do let us know your comments. You might disagree with something, you might agree with something. Please tell us. बेरे का दुख बहुत ही कठिन है, बेरे का दुख बहुत ही कठिन है. प्रीतम अब आजा बना परदेसी बाला मैदान वकीले. इस पार जमुना उस पार गंगा, इस पार जमुना उस पार गंगा, बीच चंदन का पेड़ ना. इस पेड़ पर कागा बोले, इस पेड़ पर कागा बोले. कागा का वचन सुहावना, कागा का वचन सुहावना. परदेसी बाला मैदान वकीली, परदेसी बाला मैदान वकीली, परदेसी बाला मैदान वकीली, परदेसी बाला मैदान वकीली,
सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मेरे साथ अभी जुड़ी हैं क्रिस मलिका भद्रा अपनी न्यू शाइनिंग कंप्यूटर पर, क्योंकि आज और पिछले हफ्ते भी मैं उनका चेहरा देख पाया था, विच वॉज न्यू, क्योंकि इसके पहले वो धुंधला धुंधला सा दिखती थी, लेकिन आज शी इज़ बैक। कैसी हैं आप क्रिस? गुड इवनिंग मनवीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड। यहाँ पे बारिश हो रही है और ऐसे कहते हैं कि जून तक ऐसा ही मौसम चलेगा। एंड वो बोलते हैं ना कि भाई आई वांट द क्लाइमेट टू चेंज। लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आई वांट द क्लाइमेट टू चेंज। भाई बहुत बारिश हो गई जी, वो तो है। और उधर हमारे यहाँ ठंडियाँ आ रही है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वी लव विंटर्स, मी एंड माय वाइफ, वी लव विंटर्स। So, for people who don't know, Chris presents Coconut Chats, and उनका वो पॉडकास्ट है, YouTube पर आप ढूंढें तो आपको मिलेगा। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं। तो क्रिस, क्या हो रहा है कोकोनट चैट्स पे? This week we spoke with someone from New Zealand जो कि he's a full-time professional, लेकिन उनका passion है he dresses up as Darth Vader for children who are terminally ill. Oh, that's so beautiful. Yeah, and he just goes there, please, just, to give the kids a good time, plays with them, and he's been doing it for a considerable amount of time. Yep, and that is such a touching thing. और मुझे याद है, our daughter was in hospital long time back, to the children's hospital, and वहाँ पे you have clown doctors. I mean, I don't know if that's in New South Wales only, but clown doctors. So they come, they are dressed as doctors, but they're clowns. So they'll come, they'll perform for the children by the bedside and go away. Yeah. And that is such a wonderful service. Volunteers, sare. True. Amazing. True. So tell us, you had this very beautiful topic. Is corporal punishment okay for kids? बच्चों की पिटाई करना ठीक है कि गलत है? Is that what you're saying? I am. ये कहाँ से आया टॉपिक? I'm Is this saying even कि relevant आज की डेट में? Do people still beat up their kids? many people do. Many people think that's the only way to go forward to teach kids ethics. Okay. Yep. And आपको क्या लगता है कि do you think it's a bad thing? Is that what you're saying? Yeah, I think it is. It is not needed. So I'm doing a poll as we speak. Did you get hit by your parents to discipline you? Yes, सुधार दिया मुझे, या no, बिगाड़ दिया. So there's an error in there. So I'll just fix it up. But yeah, so there is this poll that's going on, and yeah, कि भाई तुम्हारी पिटाई हुई है कि नहीं? But तुम्हारी पिटाई हुई है कि नहीं, Chris? Did you get corporal punishment? बहुत ज़्यादा. अच्छा, serious? Yeah. And the only child. Yes. Wow. Yes. Okay. I've never heard that. Yeah. See, with me, you always hear things for the first time only, don't you? Most of the time. हाँ. यहाँ तक कि मेरी पिटाई भी नहीं हुई कभी, जैसे आप बोल रही हैं. मेरी हुई है extensively, and yeah, it's a common gesture in our family कि थोड़ी बहुत पिटाई is good for an overall development of the child, although I would beg to differ, and that kind of prompted me to have this conversation over your chat show. Okay, so but thanks for, and obviously it has affected you somewhere, positively, negatively, I don't know. Has it affected you positively at all? I learned of discipline even way before I knew the meaning of the word. And negatively is, as an individual, I'm only speaking for myself here. I really think corporal punishment is not the way to go. It leaves a scar somewhere in the child's mind. Okay. So you have decided not to use corporal punishment on your children? No. And you don't Never. think there is anything good about it? Again, I'm speaking for myself. Absolutely. I feel the day I become a mother and I hit my child, that will show my inability to make that innocent mind understand.
And when I hit my child, it's just failing me as a parent, because I have somewhere forgotten the fact that he or she or they are a little one. Somewhere I'm expecting them to come at my mental level and understand the things I want them to understand. So this is how I tell myself every day that no matter how hard it gets going, I'll try my best not to raise my hand. लेकिन बोलते हैं कि भाई, इनफैक्ट इवन न्यू साउथ वेल्स के लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन हिट अ चाइल्ड एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट विद अ क्लोज्ड हैंड. ओके, इट्स लीगल. You can't beat them to death, but you can definitely whack them on say the bum. And but yes, अगर आप कुछ और हथियार इस्तेमाल करें मारने के लिए, it is illegal. So even the law, और जैसे इंग्लिश में कहावत है, spare the rod and spoil the child. So ये कहीं ना कहीं से बातें आई हैं. And obviously this is long before this age of when, you know, पहले हुआ करता था कि children should be seen and not heard. ऐसे बोलते थे कि भाई जो बच्चे हैं घर में they should be seen, अगर especially कोई आए उनका शोर नहीं होना चाहिए. So there was a lot of it was a different time and different way of raising children. But अभी है कि भाई you need to talk to your children and you need to communicate and negotiate. But sometimes I think when there is no time, say okay, छोटा बच्चा है, अगर वो कुत्ते के मुंह में हाथ डाल रहा है for instance and he's not learning, या आग में या switches घर में उसके अंदर उंगली डाल रहा है, so how do you keep the child away from danger? No, so do you mean to tell me that if you hit the child, that is one solution of keeping the child away from danger? I'm asking you. So एक emergency situation है, there is no time to talk, to explain. There is a dangerous situation, the child is not listening, the child is putting his or her hand onto a fire or into an electronic thing and सुन नहीं रहा. You can alleviate your voice, you can escalate your voice, you can snatch that child away from that situation. But how I see it, the minute you raise your hand, it goes the other way around. There are high chances that the child might become rebellious the next time you hit him or her. Okay. So what will you do in that case if your child becomes a rebel? कि आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेरी कुटाई करो, I'm going to be the way I am. Doesn't affect me. Yep. So वो totally 180 उल्टा opposite हो गया. But and a lot of children listen and they say, yeah, it's good कि भाई तुमने वो मुझे you gave me a hiding and that kept me on the straight and narrow. I've also heard this in a lot of cases. Or some children will say कि भाई my parents didn't discipline me enough, so I do whatever I want. In fact, from what I understand, look, I'm not an expert on child rearing. Okay, I'm not the best father or parent. But what I have heard, कि भाई बच्चों को they need limits. This is what I've heard. Okay, children, they might complain, but they want limits because it gives them a structure to work in. Okay, so I'm not sure if that works or not, and I'm not even sure कि by just talking to the children and negotiating also works. But that's my experience as a parent. Okay, I don't think हम लोगों ने बच्चों की ज़्यादा पिटाई की. Yes, I might have given an odd whack here or there. I've done that. But and normally we talk, but I don't know. I think when you're literally not a whack, when you're slapping your child across their face, it puts a serious blow on their mind. Because a slap on your face is very, very sensitive. Yeah, it no hurts. matter how small. But More I'll than tell the you, hurt, it's like, it feels very insulting somewhere. No matter who's slapping you. Like it's humiliating. Yes. Yes. It's humiliating. You whack them on your back, you whack them on their backside, wherever. That's a different kind of a policing punishment. But you're slapping them across their face, I think it goes on a different level altogether. So humiliation hoti hai. Is that what you're saying? Exactly. Okay. So are you willing to talk about your own experience? मुझे याद है, मुझे बचपन में 1 या 2 बार थप्पड़ पड़ा है.
And my dad whacked me once. Mum maybe a couple of times that I can remember. We got screamed at a lot of screaming. Yeah. But what about, that's emotional trauma. एक तरफ physical trauma है, दूसरी तरफ screaming से emotional trauma होता है. And when I was a kid in school, teachers तो हमें आते जाते थप्पड़ मार देते थे यार. Yeah. कान मोड़ने, you know. We used to get, and this is serious, you know, जो ruler से vertical रख के cuts मिलते थे हाथ पे. Ruler से पिटाई होती थी. हमारा एक प्रिंसिपल था, he was mad. हम लोग उसको बुलडॉग बोलते थे. He would throw the duster at students. Can you believe this? He would teach. And वो father Ribeiro उसका नाम था. He was mad. तो वो he would teach us history, and he would get so mad कि वो he would hurl a duster. Can you imagine वो duster पुराने वाले भारी हुआ करते थे. आज वाले नहीं, लक्कड़ के होते थे. हाँ, wooden dusters होते थे. Blackboard के. Throw it like yeah, used to that was target just it. madness. Teachers हमारी पिटाई कर रहे हैं, caning हो रही है, and I think we turned out all right. But I think I'm all right, but somebody might think I've turned out totally crazy. But sometimes what hurt was not the physical stuff, but the humiliation. एक टीचर थी हमारी, she would put us in the waste paper bin. उसमें खड़ा कर देती थी, and she would take paper from the waste paper bin and stuff it in your mouth, and you had to stand there in the whole class. So इतनी सारी torture हमने झेला है, and I think we are okay. Maybe somebody else will say I'm crazy, but what about you? Did you get corporal punishment in school? No, never in school. Never in school. Never in school, but yeah, at home, yes. Yeah. That's But very it surprising, varies. because as a girl, normally people don't beat girls. हमारे यहाँ, as I told you, like there's this belief that kutai is good. The So is more it? you do, yeah. Okay, that's No. quite different to what I thought. मुझे लगा था कि नहीं, हाँ, लड़कों की तो पिटाई होती है घर में. They get treated. हमारे यहाँ ये सिस्टम बड़ा जेंडर न्यूट्रल है. हम जेंडर बायस नहीं करते इसमें. Sorry. For example, my sister never got beaten up. उसको कभी थप्पड़ नहीं पड़ा होगा बचपन में. But of course, she's the goody one, you know. And I did crazy things. My brother did crazy things. Or I can't remember. I have been subjected to whacking here, there, slaps, everything, shouts. So yeah. Look, sorry, I've got the hiccups. And that's from drinking water, by the way, not from alcohol. Because मैं पी रहा था, and Jimmy says कि भाई क्या पी रहे हो? So, yeah, and in fact, Suman has asked a question. She says, are you scarred? And it's a very sympathetic question. She's not sort of, you know, it's very sympathetic. Yes, when I am, and that is why I've made this decision. I'm not a mother yet, but the day I become a mother, I've made this stringent decision never to do it to my child. And Suman is saying, I have glowered at my kids and growled. That's been as far as I've gone. Wow. Yeah. So nice. Sometimes I have lost patience with my children when they were younger. Yeah, not when they're growing up or maybe they'll tell you something else. But, you know, yeah, but sometimes I think this negotiation and this, ki bhai, you know, talking and explaining, sometimes there's no time. Sometimes you run out, you got too many things on your mind, you're balancing things. So sometimes a whack is easier, baad mein, as long as there is an understanding. A whack is fine, but never a slap. To me, non-negotiable. Yep. मतलब ये मुझे ये समझ नहीं आती. अच्छा, आप as a parent आपके पास टाइम नहीं है तो उठा के एक चांटा खींच दो. Is that the solution to the problem? No, it's not a solution maybe, but it's something that you do because there's no time and you have to take some action. Safety की बच्चे के safety के लिए. Yeah, so listeners, what do you think? Maybe people will tell me, oh, Chris, you're not even a parent yet. Maybe that's true. I don't know what I will do when I'm actually in that situation. But it's an unfathomable situation. Ki mere paas time nahi hai. I'm running short of time and I just slap my child who is innocent, who's doing nothing but doing what he's supposed to be doing at that age. He's either irritated, putting a prank, or he's being naughty, he's sneaky.
उसके लिए मैं जड़ दूं एक खींच के because मेरे पास टाइम नहीं. Then why am I even a parent if I can't manage my time? Okay, so we are doing this poll that's running. That did you get hit by your parents to discipline you? Yes, सुधार दिया मुझे 0%. Yes, और बिगाड़ दिया 33%. So 33% people are saying yes, और बिगाड़ दिया मुझे पिटाई करके, and 67% people are saying no. कि भाई नहीं, they did not get disciplined. So that's a good indicator. That's good. कि भाई really good. most people haven't been beaten up. But I'm telling you, not from my parents. Parents से एक आध बार I can remember, because it was humiliating. उन्होंने जो डांट पड़ी थी, and मुझे लगा भाई do I deserve this? But school में आज भी हम लोग दोस्त मिलते हैं. Even after 100 years of finishing school, we still talk about it. I still remember Mr. Chopra slapping me in class. And आज तक I do not understand why he slapped me. I still don't know. For me, it's the complete opposite. Never ever in school, or it was always home front. Okay. So the moral of the story is कि भाई आपको कहीं ना कहीं डंडे पड़ेंगे. स्कूल में नहीं पड़े तो घर में नहीं तो स्कूल में. I'm just joking. But yes, look, seriously, but there are some parents who cross limits. Yeah. Then it becomes dangerous. The child gets hurt. The child can die. And I've seen that, especially in Australia. I've seen, कि भाई किसी का नया boyfriend है, and there's a stepchild, and the step parent loses their cool, and some children have been killed for that. It's very sad. So that's the other dangerous side, which is not funny. So how will you negotiate with your child in case the child says कि नहीं भाई, नहीं सुनता, नहीं सुनती, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, फिर क्या करोगे? Negotiation एक दिन में तो नहीं होगा मनबीर, right? You have to build this practice from scratch. Like I have seen one of my colleagues here, the way she communicates with her daughter, constant communication, she has patiently listened to, because the child is like very open and very expressive, right? She likes to talk to her mommy. I have never seen my colleague getting even this much irritated that why are you talking so much? Anytime the daughter says, "Mommy, yes, what can I do for you? What is happening?" If she doesn't have a solution, she'll very diplomatically maneuver the conversation in a way that the child doesn't feel bad or unheard. So if we can do that to a child who's barely 2.5, 3 years, that is like the starting phase from where we initiate that concept of active communication. आप ये नहीं imagine कर सकते बच्चा class 4-5 में पढ़ रहा है, suddenly आपने एक दिन negotiation शुरू कर दिया. He or she would not even understand the process. It has to start from a very early age. And if there's a will, there's a way. And I think in the Western world, people talk to children as equals. So which is a good thing, I think. But हमारी जो society के rules है, which are different. And you can't shake off your culture like that. जैसे हमारी society में respect. What has culture got to do with corporal punishment, Manbir? Oh, culture is very important. इसीलिए तो हमारे culture में आज आए दिन everybody is coming out कि भाई हमें trauma है, हमें mental ये है, intergenerational trauma है, यही हो रहा है culture का. If you can't shake it off, कि whatever happened to me from my parents, I am not going to let that happen to my child. Every other person will come up with trauma. This is what is going to happen. But if you look in the Western world, यहाँ पे, for example, there is no respect for authority. Children don't respect the teachers. Teaching is hard. Suspension nahi hai. Some people will say, teachers will say that the children have more rights. Similarly with the police, people challenge the police, authority. Nobody gives a rat's. Especially these young kids. ये तो दिल्ली NCR में बहुत पहले से चला आ रहा है. अच्छा मुझे नहीं पता. लेकिन I'm talking of my generation कि हम लोगों को तो भाई I did not have the courage to stand up to a police person, rightly or wrongly. I could not do it. But यहाँ पे
अगर आप स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट में मैंने सुना है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, आप टीचर्स से पूछिए, आप प्रिंसिपल से पूछिए, दे विल टेल यू कि भाई आई हैव सो मच. आज ही इनफैक्ट पेपर में आया था कि भाई ये जो सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, दे कांट इवन सस्पेंड चिल्ड्रन. So there are laws now that now you can't suspend kids. So you have to accept bad behavior in class. How do you take that? And that starts at home. अगर घर में नहीं सिखाया जा रहा है, and I'm sure we have lots of Indian teachers who can tell you the same thing. And law enforcement, it's a huge problem in our society, even in Australia. So, and some people blame कि भाई this is very slack parenting. कि भाई parenting में आप you are not teaching people to respect authority, and that gets translated into very poor respect for authority. So and those are the problems, and you can see that where everybody is a winner. वो वाली आजकल है कि भाई everybody is okay, and उसमें वही है democratic कि भाई you raise your children as a democracy, कि हमने decision लेना है तो we'll let the majority decide, and sometimes you don't, because sometimes you do have to play your parents' role and say no, this is wrong, and even then You it's very play frustrating. your parents' role, but in a way that doesn't leave a scar on the child, is all I can say. Yeah. So how would you say as a जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि no respect for authority, have you seen that in Australian society? मैंने इतना तो नहीं देखा, मनवीर, to be honest. या आप पूछिए जो लोग अथॉरिटी में हैं, and they will tell you yes, this is a problem. कि it's very brash, people are brash, they don't respect family, they don't respect senior people, they don't respect authority, which is a big problem. But again, gaining and giving respect is a completely abstract and a relative concept. It's a concept for a different conversation altogether. But tell me, if somebody doesn't, if you've not taught the person or the child to respect authority, they don't respect you. So what happens when they go out into the real world? They don't respect the local policeman. They don't respect their boss. This is where I have another issue, Manbir. If I tell my child to respect authority, then in those lines, what I'm implying is, since I'm a mother, you respect me no matter what I do to you, since I am in a position of authority. Yep. So that's dangerous teaching for my child. Since I am in a position of authority, does not enable me to do whatever the hell I want to my child. And why should I teach my child that thing? So I should be teaching him respect what is right. So being in a position of authority where you want to enforce certain rules, and those rules could be about safety, those rules could be about anything else, and the child says, नहीं सुनता, मेरे जो दोस्त हैं, उनके वहाँ पे ये rules नहीं है, भाई तुम कौन हो? Then what do we do? I guess this calls for a long, in-depth conversation, continuous conversation. Maybe if external counseling is involved, why not? But punishment is not the solution to it. आप एक कुटाई करोगे, वो और भाग जाएगा पीछे. आपने हाथ लगाया, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ. Oh well, But चलिए, thank you as usual, Chris. And so I hope some people have been listening, and some people have some ideas. So please let us know what you think. Let's look at the poll. What's the poll saying? पिटाई के बारे में. Did you get? Oh, that's weird. सारा change हो गया. Did you get hit by your parents to discipline you? 100% people are saying no. I don't know how the poll changed. Okay, so that's good. There's a ghost there. I'm the only outlier then. Maybe you just imagined it. No, but look, but I'm sure if you are suffering for that, you will go and get some professional help for that. I'm sure. Yeah, and I hope you can deal with that. It's never easy. It's never easy for any child to go through that. Okay. Thank you, Manbir. You take care and look after yourself. Okay. You too. Thank you. Bye bye. So that was Chris Mallika Bhadra joining us from Melbourne. Coconut Chats. Unka. Hello. What are we doing? So 10 bajne I'll be going off air on 89.3. I might hang around on Facebook for a little while,
as we let me get out of here. Okay, so why don't I get out, and I'll need to go back in and then get out of there. So listeners, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. Please have your comments coming in. It's important. This was a very good discussion that we had. कि भाई corporal punishment. Look, parenting, as I always say, is a very hard job. You can never win. Okay, you might think that you're doing the right thing, but sometimes doesn't work. And उसमें अगर आप mix कर दें कि भाई बच्चे की पिटाई भी करनी है, and so that brings in a different sort of dynamic altogether. And so 10 बजने को है. I'll sign off from 89.3, and I will activate something else that is happening there. And hello, what happened here? But anyway, so I'll continue with this. Yeah, तो आज हमने 2 polls run किए, and 100% people are saying no, they did not get disciplined. Then to our other question of do you learn by reading or watching videos? So let's see what the scores there were, if I can bring it up. Yeah, yes, reading. So 57% people said reading, 29% said videos, and 14% says I don't learn. So I don't know, bhai. Lekin, yeah, so let's see. Publish poll graphic. I've done that. लेकिन ये मैं हूँ, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. ये कार्यक्रम है कहते सुनते. अपने दोस्तों को प्लीज़ इस कार्यक्रम के बारे में बताइए. And okay, so Abha Gargia ji. Oh, so I've got a few comments. Let me see what those comments are. Abha Gargia कह रही हैं कि भाई, I've noticed that younger generation have an open communication with their children, very different environment, and the way of bringing up kids. We can learn from them. Okay, so let's hope we can learn from them. Let's hope they can handle their child well. I don't know what's happened there. Okay, what else? Suman Mathur is saying good night, take care, everybody. Thank you. And Suman is thanking Chris. And okay, Suman Mathur keh rahi hai, as usual, she's got something about, there is so much literature available on how to bring up children and how to discipline them. Young parents have been bringing up kids by the book since the last few decades, especially if there are no grandparents involved. Yes, true. Renu Singhal ji keh rahi hai, mama चांटा लगाती थी पर कभी भूखा नहीं सोने दिया. Isn't that beautiful? And उसमें एक ऐसा कहा दिखता है, प्यार दिखता है माँ का. And yes, but हो सकता है कि भाई that's not the way to discipline your children. Mubina ji ने कहा है कि I guess an occasional slap on the bum should not harm anyone. However, any form of physical punishment is a failure on the parent's part, not being able to communicate. There are many ways to discipline a child very effectively. Okay. Neeraj Nanda ji कह रहे हैं कि भाई, our maths teacher used to put a pencil between 2 fingers and then press the fingers from the front. It was very painful and we hated the teacher. Yes. Yes, yes. And teachers are nuts sometimes, you know. And Abha Gargia ji ne kaha ki bhai, I've raised voice with my son but never raised hands with my son. I have noticed he never raises his voice with his kids. He has a firm way of passing a message and grandkids know where they stand. Oh, that's nice. Okay. So yeah, maybe we need to learn. Maybe I need to learn some new techniques. Ketan ji keh rahe hain ki was a lovely discussion, lot of thoughtfulness. Good night, Manbir. Catch you next week. Keep safe. Yes, thank you Ketan ji for being here. And Harkirtan Singh ji, are अमेरिका में बैठे हैं आप कि कहाँ पे रहा? हाँ, yes, of course. कैसे हैं आप हरकीर्तन जी? Thank you. Good night. आप अमेरिका में बैठे हैं and ये हमारे जीजा जी हैं. So thank you Harkirtan ji for being there. And thank you everybody for turning up. Thank you everybody for encouraging us to go on with this show. And let's see what I have done. But anyway, so maybe something will happen there. दोस्तों, अगले Thursday I'll be back. So please do tune in and do tell your friends about this great show that we are trying to put together. And we are not number one. Lekin yes, we are trying hard. We are trying to bring in good quality conversation. So थोड़ी सी म्यूजिक, फिर गुड नाइट. अपना ख्याल रखिए, बारिशों से बचिए.
और अपने घर का ख्याल रखिए. टेक केयर. உருவாகி புவி தோன்றினாள், ஒரு தெய்வம் பெண்ணாகினாள், மகளாகி ஒரு வேடம் இவள் மேவினாள், அகமெங்கும் மலர் தூவினாள். இவள் ஏற்கும் வேடங்கள் நூறாக கடல் வாழும் மீனாகினாள், மகள் தங்கை தோழி என்றொரு மாறி மனம் முடித்து தாயாகினாள். இமை மூடி விழி காக்கும் இயல்பாக நம்மை காத்து ஒளியாகினாள். தொல்லை 100 கொடுத்தாலும் சலிக்காமல் பிள்ளை போலமை பார்க்கிறாள். உருவாகி புவி தோன்றினாள், ஒரு தெய்வம் பெண்ணாகினாள், மகளாகி ஒரு வேடம் இவள் மேவினாள், அகமெங்கும் மலர் தூவினாள். ஒன்றாக உருவானது. பெண் என்பவள் பேதை இல்லை, ஆண் வாழ்வில் சுகம் சேர்க்கும் போதை இல்லை. பொய் வாழ்வை மெய்யாக்க போராடுவாள், கை கோர்த்து கணவள்ளி நீராடுவாள். காலங்கள் கடந்தாலும் இவள் வாழுவாள், இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பெண்ணானவள் இரையாகி கதிராகி தினம் தோன்றுவாள். மகள் என்றும் தாய் என்றும் பேதமில்லை, மடி மீது நமையேந்துவாள். உருவாகி புவி தோன்றினாள், ஒரு தெய்வம் பெண்ணாகினாள், மகளாகி ஒரு வேடம் இவள் மேவினாள், அகமெங்கும் மலர் தூவினாள். So, दोस्तों मुझे पता है ये थोड़ा सा लेट है, लेकिन I've just received an interview that Tawfiq has done with the Superintendent of Police about Ramadan. So I'm going to play that interview. So please do watch it, क्योंकि ये इसमें it's about कि भाई रमज़ान की क्या तैयारी है और पुलिस कैसे involved है उसमें. So I'm going to play that. So here we go. At my command and across the New South Wales Police Force, we'd like to wish you, your family and friends a blessed month of fasting. Ramadan Mubarak. Good evening and welcome to Kehte Sunte. I am your host Tawfiq Ahmed Sheikh and you have joined me on 89.3 2GLF FM. Our guest today is just in time for a very important event coming up. We have the holy month of Ramadan starting simply because we've just come out of COVID. It's been 2 years, a lot of patience and a lot of holding back from the community.
As much as we are happy to celebrate it out in the open, there are certainly some things that we need to be mindful of. And I was certainly so fortunate that Superintendent Adam Johnson, Commander of Bankstown Police Area Command, agreed to have this conversation with us today and see how best we can make use of this month while we keep ourselves safe, but at the same time, don't let the COVID aftermath be a spoiler in our enjoyment. So, Commander Adam Johnson, thank you so much for joining our platform today and having this conversation. How are you doing today? Oh, fantastic. Thank you for having me on the show. Thank you. Thank you so much. Commander Adam has been in the police force for 32 years, so he does know what he's talking about. And recently, just under a year, he has joined the Bankstown Police Area Command. And before that, he was with the Auburn, so he is well aware of what culture and the ethos that we represent. So, Adam, thank you so much for joining us once again. And may I begin with this? You have been in the police force for 32 years. You worked in the Auburn Council. Before, I remember you mentioned that you also have been in the Bankstown Council before, Bankstown Area Command, and now you've come back as a commander there. What has been your experience as a police person managing this particular area, especially when it comes out to the culture, the festivities, and the colors we represent in this area? So please, your take on what your experience has been. Yeah, thanks for that question. Look, I did work at Bankstown in the late 1990s. I was a detective then, and I've since been promoted up to the rank of commander. But what's been consistent, particularly with the Canterbury Bankstown, particularly the Bankstown area, is the cultural diversity. And that's what makes it such a good area. And even more so now, across, even in the southwestern Sydney, when I worked over at Auburn as well, like there's a large Turkish community over there, a large Korean community as well. Just, dealing with the community leaders and the good spirit, the goodwill of the area is fantastic. And I don't think it's ever really been stronger. I know we went through a difficult period recently with COVID. But, we've come out of that reasonably strongly. And the message is that the police in Bankstown are very hardworking, very committed to the community, and we're there to help and assist you. Sure, and thank you. I have at one stage been a resident in the Bankstown Council area for the longest time, and I exactly understand what you're saying. That begs me a question here. Certainly around the Ramadan, the focus becomes Bankstown, Auburn, Lakemba. These are your focal points, and Lakemba topping the chart there. Sometimes I have found difficulties in convincing people who don't live in these areas to come and enjoy. And every time they step in, the vibrancy and the colors and the food that comes in, this suddenly changes your mind. Have you noticed that? And what have we done around the Bankstown and the Lakemba or the Auburn area to change that over a period of years? Yeah, absolutely. I was actually going to mention before the food in this part of Sydney is fantastic as well. But look, we as police, I work in very closely with the council as well and the local mayor, which is Carl Asfor in Canterbury, and also the local emergency operations controller. So I work across both the Bankstown and Campsie areas. And yeah, Ramadan is central. It's across Sydney, it's across New South Wales, but we've got a large Middle Eastern and Muslim community in these areas, and that's why the vibrancy is really sort of concentrated in Bankstown to maybe a little lesser degree over in Auburn. Of course, we've got the Gallipoli Mosque over there, and they're fantastic people that run the mosque there, and also specifically over there at Campsie, a lot of activity. So yeah, my suggestion is come over and enjoy the festivities. You'll be well supported. Oh, thank you for that. Adam, brings me to my next question. How have you celebrated Ramadan so far? Because you've been in the police and that area so long, and what are your plans for celebrating Ramadan this year? Well, look, going back last year, as we know, with COVID, I was at Auburn. It was a little bit stop-start. Unfortunately, we had some of the public health orders in place. This year, more or less back to normality. But I'll talk about COVID in a minute. But I'm very engaged during the next month. I've got a number of iftar dinners with community leaders over the next couple of weeks that I'm looking forward to. But it's about getting that positive message out to the community to come and enjoy. Sure. Thank you for that. You mentioned COVID in that conversation, and that, of course, is going to be an important aspect, not just for the people of the community members who are going and celebrating Ramadan and celebrating their times after the fast, breaking of the fast. It's also going to be a police management issue. How is the police handling or tackling this issue around the COVID and the celebration?
Well, look, at the moment, it's really up to community members to sort of manage themselves, okay? Much different to last year. But we still need to be vigilant as a community, because there's no doubt that COVID is still in the community. We need to take care, be vigilant when engaging with family, friends in the community. So look, if you're feeling unwell or you've got symptoms of COVID, you need to go and get tested prior to engaging with others. And it's no different to us in the police station at the moment. We've got a couple of officers that are positive at the moment. They're not in the workplace, they're at home. We've got to be careful about it spreading around. And now, particularly during Ramadan, where a lot of communities and families come together, just be careful, just be vigilant that you don't get infected, you don't spread it. And that kind of reminds me of a quote once I read somewhere, is that every civilian is a policeman without the uniform. So self-policing is something which is much more important. So if we notice something that is going wrong, if we feel unsafe for any particular reason, if something happens, is police doing anything extra, anything specific to make sure that things don't go wrong? In relation to a policing response, but we'll just be there celebrating with people. We'll have police visible, just in the normal course of our operations, but we're there to celebrate with you as well. And then to make sure people are and feel safe as well. True. And when it comes to crime, when it comes to night and crime have a very, very close relationship with each other. But to put the spanner in the works, the Ramadan festivities also happen in the night as well. It's more like it's a combination which can sometimes go wrong. What have you noticed in that case in the past around the Ramadan time? Anything specific on the safety side of things, not necessarily the medical, but personal safety and avoiding to be in places where you can land in trouble? Is there some guidelines that you'd like to give us or share with us today? Yeah, look, I'm not really aware of any specific problems. Look, there's a good feeling of goodwill in the air. People are there to celebrate. But at the end of the day, we've got to look out for each other as well. If you need the police, call out and we'll come and help you. All right? But I no, there's more people at night. There's more activity and whatever. But in relation to more crimes, not really. No, I'm not really worried about that. Crime rates locally are pretty stable at the moment. We're pretty happy with how things are travelling locally. And that's due to a lot of the good hard work of your local police, and not just in Bankstown, but across metropolitan Sydney also. But I think locally, just come and enjoy the festivities. And, it's a bit of respect as well. Show respect for your fellow community members. Thank you. That is a very kind message. So, Adam, before I let you go in this conversation today, I would want to leave the stage with you and give out your message, speak your heart out, representing the New South Wales Police and, of course, the Bankstown Local Area Command. Yeah, thank you. Look, I'd just like to take this opportunity to congratulate the Muslim community in not only the Bankstown area, but across metropolitan Sydney and New South Wales as well, on the commencement of the holy month of Ramadan. On behalf of the staff at my command and across the New South Wales Police Force, we'd like to wish you, your family and friends a blessed month of fasting. Ramadan Mubarak. Thank you. Thank you so much, Adam. And I do take this message forward to my audiences through this platform. And audiences, I request you to move this word forward. Please share it with your friends and family. If at all you do need to get in touch with the police, you know exactly how to do that. Unless it is an emergency, please do not use 000. You can always call 131 444. Adam, thank you. Thank you for joining on behalf of entire team of Kehte Sunte and the audiences. And thank you through you, I do thank New South Wales Police and the multicultural liaising officers who have made this conversation today possible. Thanks very much. Thank you. So, keep listening to Kehte Sunte, 89.3 FM, every Thursday, 8 p.m. to 10 p.m. Only on, 89.3 2GLF FM, including Facebook streaming live as well as YouTube. So don't forget to like, subscribe, and comment on our particular conversation of how you liked it. This is your host, Tawfiq Ahmed Sheikh, signing off. So that was a late entry of the interview with Superintendent Adam Johnston about the Ramadan festival. So I'm so excited. पिछले साल भी गए थे हम लोग and we had a great time. So when it's on again, we will be there, bells and whistles. But that's all I have from the show tonight. Take care. Have a good night. I'll play some music and then fade out.
ചൽ കാടൂടെ കഥ പറയുന്നു Good night.